ये क्या है यार? इसको कैसे निकालूं? What the heck is this? मैं यूट्यूब पे देखता हूँ, अभी तो पब्लिक किया ना। नहीं, अभी पब्लिक नहीं है जी। है क्या? हेलो। हाँ ठीक है, उसका। हाँ, उस पे बना रहा हूँ। ओके ओके, ठीक है। पब्लिक है क्या अभी? एक काम कर, ओबीएस में जा एक मिनट। वो मीडिया सोर्स है ना, उस पे राइट, उस पे डबल क्लिक कर या जो भी। इसमें स्पीड को 0.75 कर दे। 0.75। 75%। ठीक है। ओके कर अभी। और एक चीज़ शायद करना पड़ेगा, इसमें वो ऑडियो में देखना, वो आई थिंक माइक माइक का 0 कर दे आई गेस। वो ऑडियो में देखना, आई थिंक माइक माइक का 0 कर दे आई गेस। ऑडियो में देखना, आई थिंक माइक माइक का 0 कर दे आई गेस।
अरे ओबीएस में जा, एक बार वो एको में चला गया कुछ तो। डेस्कटॉप वाला जीरो करते ना। वो मीट पे नहीं दिख रहा, लाइक यूट्यूब पे नहीं दिख रहा वो। पब्लिक है, पब्लिक है। अरे एक बार डेस्कटॉप वाला ऑडियो जीरो कर देना, क्योंकि वो एको हो रहा है। वेटरन्स भी आएंगे शायद से। आई थिंक निधि इज गोइंग टू कम। Oh, nice. आई एम नॉट श्योर। मैं ये मीट लीव कर रहा हूँ। भाई मैं 3-4 लोग को को होस्ट बना देता हूँ, स्मिथ द्रुमल वगैरह को। अब यार एक तो मैं पीसी पे नहीं। पर्सनल अकाउंट से बनाया क्या? नहीं सीओसी अकाउंट से ही बना है, बट स्ट्रीमिंग का 2-3 लोग को एक्सेस दिया है, उसके लिए थोड़ा सा
लैग हो रहा बट स्ट्रीमिंग के लिए COC अकाउंट रहना जरूरी है क्या? है। यस यस, यूट्यूब पे COC अकाउंट है। अच्छा, नहीं नहीं, स्ट्रीमिंग जो मतलब जो OBS चला रहा है, OBS से कर रहे हो ना तुम लोग? हाँ, OBS है अनुराग हाँ, का। तो जो OBS चला रहा है उसको तो खाली स्ट्रीम की देना है ना? उसको मैंने COC का अकाउंट दिया अभी के लिए, बिकॉज वो OBS स्टूडियो इंटीग्रेट हो रहा था। अच्छा, ठीक है। वो एंड तुषार माली ये स्ट्रीम हैंडल। तुषार तो है क्या? ठीक है, नाइस। ठीक है, लेट्स बिगिन। All right, so hello everyone. We are finally at the phase of Inheritance 2022 presentations. And the first team for the presentations is Team Brainiacs under the app dev domain. Team Brainiacs, you guys can share your screen and start with your presentations. Hey guys, can you just give us 2 minutes? One of our team member is having a network issue on her side. Thank you.
Hello everyone. Sorry for the delay. Can we start? Yes, you can begin. Hello. Can you please see my screen? Hello everyone. This is Sally Gholia from Team Brainiacs, and my teammates are Aryan Apte, Khushi Balia, and Subodh Dalvi. We have made My Money, which is a personal finance management application which helps us to save more. Let us see how My Money helps us to save more. So this application basically helps in improvement in financial literacy of general masses and also gives them an estimate of their everyday expense and savings. It also helps in easier understanding of expense pattern and better usage of their regular income. This application overall helps in controlling extravagant spending on financial liable activities and goods. The technologies we have used are for front end we have used Flutter framework. We're using Dart language, and in back end we have used Firebase Firestore. We have used the following resources: Flutter Course by Angela, Ottoman Coder, Stack Overflow, and Jonahan Milke. So now Aryan will continue. Am I audible? Yes, you are. A fantastic morning, everyone. So, as you can see here, there are we our app aims to build a category-wise expenditure pattern so that a user can add up to 16 categories of expenses, and at the same time he can check his daily, monthly, and yearly expenses as well in the app bar. So, and the third feature that we have integrated is the income feature. How the income feature works is that it takes the input of the monthly income and then subtracts the total monthly expenses to give the total saved amount. And of course, he can also check the record of expenses at any date. There is a date picker which we have integrated, and then we fetch from the backend the category wise expenditure of that particular date. And the most important feature and the highlight of our app is the setting of monthly budget. So the user can keep track of how much he's spending, and we can also give him a message when he has overspent. And yes, there is also a goals feature wherein the user can, give that goal a name, then specify the target amount and specify the amount which he has saved already. At any point, the user can either set the goal as completed and or he can just update the saved amount as well. Next slide, please. Yeah, so coming to pages, we have implemented login page, sign up page, then expense page to set daily, monthly, and yearly category wise. It's all in the app bar. Then you have a record page. Now, record page, budget page, and goals page, these are all on the bottom navigation bar so that the user can check their records, budgets, and goals as well. Also, we have integrated a logout page so that the user can log out, of course. Next slide, please. So this is just the current implementation. I'll also be showing you the actual implementation using screen share if you will also. Okay, so coming to problems faced, the first problem that we faced was creating two app bars. Up till now, we had only studied that scaffold supports only one app bar, but we fetched a lot of resources, and of course, Tushar and Riddhis, they were always eager to help. So we successfully implemented two app bars as well. Then the second challenge was, I mean, the most challenging thing among these things was that the structuring of the data in Firebase. I personally, and I mean, our team was not very much aware with databases, and we were directly jumping to NoSQL databases. So that was a little hectic, and it took time to understand how to structure the data well for easy retrieval. And of course, creating two streams for data fetching. Here in the monthly tab, monthly expenses tab, what we are going to do is we have already implemented the current expenditure of the month versus the budget. So for that, we initially thought of creating two streams. I mean, two particular locations for backend data fetching. But that was a little difficult for us to implement, which we later on figured out thanks to our mentors.
Mentor support, yes. Tushar Mahi and Ritish Jarke were our mentors, and I mean, we seriously cannot thank them enough. I mean, whenever we had a doubt, they were always there with us. They never ever said कि यार आज नहीं करते कल करते हैं. They were always like चल आजा, we'll solve it right now. So they have always offered their extensive support. Khushi, could you continue further? Subodh shall take this up. Hi. So now we will move on to our future prospects. As of now, our main future prospects lie in four main categories, which we are going to list forward in front of you. Firstly, the ML to understand expenditure pattern and suggest sales for the most spent on items. Now, using ML, we wish to understand the expense pattern of the user by finding out which category he chooses and continuously spends on. And accordingly, we can display him pop up notifications when he's spending on certain items too much. And on the other hand, we can also show him an upcoming sale for the same item. So, that is one aspect that we'd like to cover. What happened was ML is like a partially implemented zone in our project. We created the ML model, but since it took us a lot of time to figure out the backend of NoSQL databases, we were unable to implement it into the app successfully. So now, as a part of our future plan, this is going to be the main concept and the main aspect that we will look forward on delving into. Next slide, please. Another aspect we'd look to is recommendations. Now, recommendation models of ML are very common, and this is something we'd like to take use of. The idea is to create the goals feature that is already in the app will be used to give the user an option to set priorities and plan for what he wishes, like foreign trips, buying cars, houses, and so on. And based on various advertisements that we can find online, we will give him the best possible options. At the same time, we can help him control and monitor his everyday expense. So the ML model will, as a whole, help in simplifying their budgeting and saving process, and by making the right predictions of how much he'll spend. Also, we will be fetching data from financial welfare schemes, which will be very beneficial to the lower sections and the lower strata of the society, since this is something that a lot of people really depend on, especially from the government schemes like farmers or daily wage laborers and so on. The next will be continued by Khushi. Yeah, so a few more features that we plan to add on in our project. The next one is going to be reading credited and debited amount from bank account through SMS. So at this point in time, what is happening is everything is entered manually by the user. So it is not automated. So what we look forward to is if in the future we could read the SMSs. So whenever uh, a transaction is made, so a amount is credited, suppose a user receives a salary, so he gets a notification on his phone by the bank account. We'll read the SMS and automatically update that amount into the app. So we'll just automate things a bit so it's easier and not completely manual. Similarly, once the user withdraws some money from the bank, he'll get an SMS. So the app could read that message and then update it in the app itself and ask it for which category did he spend that amount on. So this is one of the feature that we'll be implementing. The next slide. Also, stocks and fetching the real time data. So what we plan to do is we'll ask the user to mention all the stocks that he's invested in, and then we could show the graph of those stocks when it reaches its peak value, when the user could suffer losses. So basically, whenever a user thinks of a finance perspective, everything that he could think of should be available in our app itself. So basically, to implement this, we'll have to go through
making our app little more secure. Only then we can fetch the data from the bank accounts and the stocks and stuff. So this is all we've planned for this app. The next slide. Yeah, so that's all about our project and what we planned for it. So any feedback and suggestions are most welcome. We would also like to go ahead with the demo, if you shall like it. You can continue with the demo. I hope my screen is visible. Yes. So basically, this is the first page that user comes on to. So here, as you can see, we will show him how much he has spent in the total day. So you have spent 14,342, and these are the individual categories and how much he has spent on that particular category. Say in the investment, the current amount is 250, and now he wants to append it to, let's say, 300. So we shall click on it, and then we will show previous amount for investment was 250, total amount expense for investment. So let's say like 300, and then he'll press update investment, and that shall be reflected here. So this is basically how the day page is going to be. And let's say he wants to add another category of expense. So he'll click on the plus button. So pick up a category. Let's say he adds household 100 rupees. And then he'll click on save. So as you can see here, household is added 100 rupees. And the total your spent amount is appended as well. So now coming to the month tab. In the month tab, we shall be showing the entire month's expenditure, and of course category wise, and at the same time we shall be fetching the budget as well, accompanied with the linear percent indicator. So as you can see, for the bills he has spent 3370, whereas his budget is 6000. And if at all he overspends, we shall provide a message that you have overspent by this amount, so that he can cut down further, like this. Similarly, for the year tab, we shall be displaying his annual income, his annual expenditures category wise. Now coming to the income part, when he appends his income, so let's say 40,000 is his income. Now when he clicks on append save income, he'll see the savings till date. Now this income being a monthly income, we are going to subtract the net monthly amount from the income and display it in savings till date. Nidhi, uh, is there something? Or shall I continue further? Okay, so now this is the records page. On the records page, the default date is today's date. But if at all the user wants to see the expenditure for another date, so let's say 3rd of Feb. So the expenditure for the 3rd February will be shown here, category wise again. Then coming to the budget space, this is the page where the user will be allocating budget to each and every category. And this budget will be shown in the month tab. Then we have a goals page. Let's say I want to buy a laptop, a fancy laptop, and it costs somewhere, let's say 90,000. Let's just say 1,50,000. I want to buy a MacBook Pro. So let's say I have saved around 40,000 right now, and I click on save goal. Now when I go to existing goals, as you can see, laptop is visible. And on the left side you have the current saved amount, and on the right side you have the total, the target amount. Also, there is a linear percent indicator, just so you can keep track of how much actually you have saved. So now when you click on update saved amount, we show the user that the previous amount of was this, and so that he can enter the new amount. Let's say he got a 20,000 bonus. So now the total amount will be 60,000. Of course, that will be reflected as well. And if by doing so, if the total amount reaches 1,50,000, he can set goal as reached, so that will disappear from it. Also, there is a logout page, upon clicking which the user will be logged out of the system. So this is the general workflow of our app.
hope you will love it. Any questions? We can start with Nidhi. Hi, good morning. Good morning. Aryan, can you share your screen again? Yeah, Just yeah, sure. the presentation. Presentation? Okay. Is it visible? Yes, it is. Okay. हाँ, तो प्रेजेंटेशन बहुत जनरल सजेशंस है मेरे पास एमएल मुझे उतना आता है ताकि आपके बाद भी जितने लोग हों अगर उनके लिए एप्लीकेबल हो तो वो भी सुन लें तो प्रेजेंटेशन में ये चीज़ एक्चुअली मुझे भी कॉलेज में नहीं पता मैंने अभी एमबीए में आने के बाद मुझे पता है कि थोड़ा नीटली या थोड़ा तरीके से अगर प्रेजेंटेशन बनाओ तो बेहतर समझ आता है जिसको आप उसको भी तो जब भी पहली बात आप स्लाइड्स बना रहे हो Hmm. स्लाइड्स नंबर्ड होनी चाहिए स्लाइड्स की जो हेडिंग्स हैं वो नंबर्ड होनी चाहिए फॉर एग्जांपल इफ आई हैव टू टेल यू टू गो टू the exact title. I might not be able to see the slide number, but it's usually more convenient if I can just know the heading number. So I Okay. can just say go to heading 1, 2, 3, 4, or 5. Hmm. And similarly, if I want to say this particular point on the slide, जैसे पेजेस में अगर मुझे कहना है कि गोल्स पेज वाला जो पॉइंट है हाँ. उसके बारे में कुछ बताओ तो मुझे ऊपर से काउंट नहीं करना चाहिए आई शुड बी एबल टू से गो टू 5th पॉइंट 6th पॉइंट 7th पॉइंट Okay, got it. to question you on something specific so the more specific you make it the better it is uh, and can you scroll through the presentation once स्लाइड में Yeah, yeah, दिखा sure. बस स्क्रॉल करना एक बार बस एक बार स्क्रॉल करो यार मुझे इतना इतना फॉर्मली मत ट्रीट करो ओके हाँ फाइन फाइन another thing the presentation not very text heavy what do I mean by that जैसे आपने आखिर की स्लाइड्स में एक्सप्लेन किया ठीक से लेकिन उस एक्सप्लेनेशन के साथ का जो टेक्स्ट था वो और कम हो सकता था तो ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत एक्सटेंसिवली सारी चीज़ें लिखो पूरे सेंटेंसेस लिखो क्योंकि आप वैसे ही बता ही रहे Hmm. तो मुझे समझ आता लेकिन मुझे वो समझता कि रेलेवेंट तो था जो कह रहे थे वो इसीलिए अगर आप पूरा लिख भी रहे हो तो हाईलाइट करो कि इस पॉइंट में मेन कीवर्ड क्या है ताकि आप भी जब पॉइंट देखो तब आपको खुद समझ आए या कोई अगर सिर्फ एक ग्लांस देख रहा हो स्लाइड को तो उनको भी वो पॉइंट्स नजर आए बस Okay. otherwise you find that people ask you to pause then they find the point then they Huh. understand so either use the text or highlight the keywords then Okay. the demo presentation के बारे में इतना ही था डेमो में आपने अभी लाइव डेमो दिया था ना ये हाँ हाँ अच्छा तो क्या आवश्यकता थी लाइव डेमो ही देने की या रिकॉर्डेड या लाइव दोनों था दोनों ठीक था एक्चुअली लेकिन इधर अगर किसी को डाउट होता तो हम एक्सप्लेन कर पाते मतलब और दिखा पाते उसे did you say something I can't hear you Am I audible? yes you are now did you हाँ say something या आई डिड वी जस्ट फिगर दैट अगर किसी को डाउट हुआ इधर मीट में तो हम मतलब हाँ स्क्रीन हाँ शेयर में बता पाएंगे अच्छे से okay okay that's a good idea I didn't think about that but if my suggestion
record it, and then know what you'll say at every point. That's one more convenient. Two, you won't face any unnecessary lags or glitches if they come. And regarding what you said about the doubt that somebody has, which you can clarify, you can always do it. Okay. पाओगे, लेकिन अगर तुम प्रेजेंट कर रहे हो तो रिकॉर्डेड रखना तुम्हारे लिए कन्वीनियंट हो गया, क्योंकि जो देख रहा है उसके लिए सेम ही है. And that way Actually, you also know where to say what. Sorry, did you say something? no, no, I said yes. Actually, Okay. बाकी तुमने अच्छा किया. और ये तुम्हारी कौन सी सेमेस्टर चल रही है अभी? अभी फोर्थ सेम स्टार्ट हुई है हमारी 2 हफ्ते पहले. Fourth semester just started. अच्छा. Oh, so your second year is ending. तो इनहेरिटेंस प्रेजेंटेशंस हर साल तुम्हारे सेकेंड ईयर के आखिर में हो रहे हैं क्या, शुरुआत में नहीं? और और इज माय टाइमलाइन? Nidhi, actually, these are all COVID kids, so they started like almost 1.5 sems late. So they didn't really have a summer vacation. So it just started कोविड kind of. किड्स क्या होता है? Okay. अच्छा. Oh, no wonder, no wonder. So this is the 2023. नहीं, 2023 तो चल रहा है. नहीं, this is the pass out कब हो गए तुम लोग? 25? 25. Ah, I see. Okay. 3 क्यों इनहेरिटेंस हो रहा है? ठीक है, मेक सेंस. ओके. बस ये जनरल सजेशंस थे. अगर आगे भी तुम प्रेजेंटेशंस बनाओ तो होपफुली याद रहे तुमको. Yeah, sure. हाँ, वैसे भूल जाओगे तब भी कुछ होगा नहीं. यू विल फाइंड दैट आउट फॉर योरसेल्फ लेटर. ओके. Thank you, Nidhi. Great work, Team Brainiacs. Great work, your mentor, Tushar. Let's move on with the next team then. Thank you, COC. Thank you, COC. Thank you, CS. Next team is Thank you. Team Algotron. Yes, hello. Arjun, Akhar, Yes, Arnav, yes. Chavan. Continue, guys. Yeah. I'll just share my screen. Is the screen visible? Yes. Yeah. So I'll start. This is our app. It has a label name StudCog. Like it's an app for student cognizance system. So if in any college, like if a student has any sort of problem which he cannot discuss with the higher authorities directly, so he can register a complaint with our app, and it will connect the student to the appropriate authorities, and then his or her complaint can be resolved. So I'll open the app now. So this is our splash screen. Will stay around for 4 seconds. After which the app opens. The first screen, this is the decider screen. Like it asks us whether you are a student or you are an official. So there are different pages for student login and official login also. So if I go ahead with the student login. So this is the page for student login. Now over here, I have to enter only my college email. Like I can even try entering my personal email if I want to, but it won't accept it. Like, can you all see the suggestion that comes over here, athar.kumta@gmail.com? If I just try to enter it, that Gmail word is cut out because normal email is not accepted. And even if I try to like manually type the Gmail word, it won't take it because the normal email cannot be accepted. So I have to log in via my college email only. I can do either this, like I can log in manually, or I can log in with by Google. So if I do this, then this is the We can generic also text sign up box. if we don't have any account. Yeah, we can also sign up. Like, Sign up also. yeah. If we don't have an account, then we can also choose to sign up over here. So this is our sign up page. It's same like login page only. We have to enter the college email. We have to set our password, and we can either manually sign up or we can sign up with the college email, like sorry, via Google. So now I have already signed up. So if I log in with Google,
Then this generic text box will open, which opens in every website. So I have to log in via my Google, sorry, with my college credentials. So this is the email, and I'm redirected to the students complaint portal. So this is our complaint portal for the students. Over here, we can see hello Atharva Kumtakar, which is my name, and that name pops up because it is associated with my college email. So like if I had registered with email address of my other teammate Arnav Chavan, that his email address is ah7_b21. So if I had registered with that email, then it would pop up hello Arnav Chavan, register a complaint. So that is our student portal. Over here, we have to enter details like our college. And for college, the keyboard pops up with full alphabet as well as the numbers. But for registration ID, as it is only numbers, only the keyboard is consisting only of numbers. So I will give my ID. Now, area of complaint is the shorthand notice of the complaint. Like you can type in very specific of your complaint. Like if my pen is lost, then I can write lost and found. And then in detailed complaint, I can say the description of the pen, like what color was the pen and where did I see it last and all. Like area of complaint can also be like maths department, and detailed complaint can be that my paper is not checked yet. So these all can be the types of various types of complaints. So if I just register a sample complaint over here, uh, and detailed complaint. Now I can wish to upload an image of the complaint. So all these text fields that you can see, college, registration ID, area of complaint, and detailed complaint, they are compulsory. Like they're compulsory fields in that form. So if you don't fill either of those fields, and if you just like I've erased the college name, and if I register complaint, then you will get a pop-up like please enter college. Same for registration ID, area of complaint, and detailed complaint. Just the upload image of complaint, that is not compulsory, because there are some complaints like my maths paper is not checked, for which you cannot upload an image. So we have kept that on depends on the choice of the an user. optional field. Yeah, it's an optional field. So if I even want to upload an image, so I can click on this camera icon, and it will directly open my camera of my device. So this is my camera now. If I can click a picture over here, and I can okay, I can do okay, like my picture is correct. Or if I want to retry my picture, I can also press retry. So my picture is correct now, so I'll do okay. Now that image has been uploaded over there in my Firestore database. Now I will also do this, and I will register my complaint finally. After registering complaint, there is a snack box which comes, which tells us complaint is registered. The solution will be conveyed on a registered email ID within 5 days. And if it is not conveyed within 5 days, then you can re-register the complaint. Like you can log in the complaint again. Now over here, the work of the student is all done. There is no more work that he has to do. So he can click on this above three dots over here, and he can choose to log out. So in this pop-up menu, you can see the name which is associated with that email. You can see that email actually, and you can see an image of in which A is there. So this image is the one which exactly pops up in my Gmail account also, like this gray color and A in between. It pops up in my Gmail account also when I try to log in with Google. So now I can log out. Now we restart the app for the official login. So now this time I am logging in as an official because I need to see all the complaints, all the previous complaints that I need to resolve. So this time I'm an official. Over here also same page for login. I can either choose to log in with this or with college email. So there is also a forgot password icon over here. Like if I enter my email, that same email which I entered for student, and I don't remember my password, so I can also do forgot password. So it redirects me to a reset password screen. So now I have to email my email ID, which is this one only. And if I choose to reset the password, so it redirects me to the login screen. And now I You will have to receive wait an for some email. time. You will receive an email. Yeah, we'll receive an email. So that will come in a minute in my notification. Yeah, it has come over here. Can you all see this? Yeah. So this is my Gmail account for that AP Kumtakar wala.
and this is the link to reset the password. So if I click this link, it takes me to the page where I can reset and save my new password. So I can set my new password like anything, like Bertie maybe, and I can save my new password. So this my new password is now reset. Now I have to again go to the app. I have already entered my email, so I can enter my new password, which I have just reset now, and I can log in. So now this is the official portal. We have actually already registered some complaints, so you can see like all these complaints which we have done. This also gives that welcome Atharo Kumtakar. Like if I had signed up with some other email, like of my other teammate Yash Ghate, if I had put email ypghate underscore b21 and all, so it would have popped up welcome Yash Ghate. Or if I have signed up with Lalit Singhar's It email, would which fetch the would name have according to the email ID. email address. Yeah, It yeah, would fetch the name that's correct. according to the email ID. Yeah, yeah. And then we can see these all complaints. This the official can also see. So there is the first college, then there is the email, then the registration ID. So we have provided the registration ID so that the official can get to know like what is the year of the student and what is the branch of the student, which can be determined by the branch code 07. Then there is the area of complaint so that he can like he can tell other his peers to check after the complaint who are associated with that department. So maybe he is not associated with lost and found department, maybe someone else is, so he can tell the others to do that work. Then there is the detailed complaint, and then there is the URL of the image that we have just uploaded. Then there is another special point, which is the timestamp. So we have provided the timestamp because to avoid multiple complaints from the same user. So if I register a complaint regarding lost and found now, and if I do it again after 1 minute, so it should not be confusing that it is the same complaint or there are two different complaints. So that's why we have provided timestamp over there, which can help in distinguishing two same complaints of the same department and all. So these are some previous complaints that we have registered. And over here also, now the important work of the official is that he has to first read the complaint, the whole complaint, and he has to how you can resolve it. There is the email ID of the student is given, so he has to give the solution of that complaint in his registered email ID. After giving the solution, after resolving the complaint, there is no work of this complaint over here, so he can just choose to delete the complaint by clicking on the delete icon. Okay. And now as the complaint is resolved and also the complaint is deleted from the Firestore database, so he can just directly log out from here. So this sums up pretty much our app. Hello, any questions? Um, am I audible? Yeah. Yeah. Yeah, yeah. So first of all, great work, guys. Like the UI is really good and all. So I had what tech stack did you use for this project? For front end we have used Flutter and Dart language, and for back end we have used Firebase and Firestore. yeah, we have used authentication of Firebase, and we have used Firestore of Firebase, and we have used storage of Firebase. Okay, okay. So I had like few suggestions which you can include. So first of all, in the officials page, like there is a list for all the complaints, right? Yeah. So Yes. in that, instead of showing the image ka URL, you could actually show the image itself, right? But Okay, actually the directly problem image is should that pop up, that right? image is not opening over there because it is not a JPEG file. Yep. So if you are using Firebase storage, so you could check like how to do that. So there is a way Yeah. to do that. So वो एक बार देख लेना. Also, you could have a feature that the official could send a message to that student. Like student ने complaint register किया, अब वो official वो complaint अगर solve कर रहा है, and if he wants to message back to the student, so you could probably have like a feature for that, जहाँ पे वो official कुछ message लिख के send कर सकता है to that student.
So वो भी तुम फ्यूचर स्कोप में डाल सकते हो like to implement. Yeah, yeah. Yeah. Otherwise, great project, guys. Nice work. Arnav, can you please share the future scopes, like the points that? Yeah. We have jot down some of the future scopes for the project. So first one being, please wait for a minute. Um, yeah, first one, we can make a community over here in the app. Like in this case, we have just made the communication between the student and the admin itself. But in future, we can make a community, like we can share the problems with our peers as well. Like if I have lost some of my phone or my watch, I can communicate with my friends as well over there, so that I can post the problem on the community, and then the whole people in the community, like the be it admin or any other person or my this co-worker, he can also view my problem, and if he finds it, he can hand it over to me. The second one being, we can make separate databases for different colleges. Like we have made this app for all the colleges in Mumbai or all over India. For example, VJTI, then SPIT, then DJ Sangvi, all other colleges. So if we want for a particular college, for example, VJTI, we have to tap on the VJTI portal. Then we have to enter the registration number of the respective college, so that we can be linked to the particular database. For example, VJTI's database or SPIT's database, depending on the this credentials. And then third one, we can on a large scale, we can integrate into office campus as well. For example, we have used campus of Geo World, then Amazon, etc. So we can use this feature in such offices as well, so that it becomes easy for communication and to resolve the problems of the employees. This is on a bigger scale. Yeah. Okay, okay. Got it. Nice. Do we have any more questions? Dharen, if you would like to ask anything. If not, then we can move ahead with the next team. Great work, Team Algotron. Great work to the mentor as well. The next Thank you so much. team Thank you, is, COC. Thank you, COC. Thank you so much. thank you guys. The next team is Team Algon. Thank you. Harsh, Rushi, Ruturaj, you guys can start. प्रेजेंट कर ना रुद्राज. Yeah, sure. Am I audible? Yes, you are. Thanks. Is my screen visible? Yes. Sure. Yeah. Okay, so we'll start. So we, the team Algo on Now, have come up with this app called as Explore VJTI.
So when, as freshers, we joined VGTI, there were a lot of questions in our mind. Some were academically oriented, and many were not. There were questions like कि यार ये कैंटीन में खाना क्या अच्छा मिलता है? Is रगड़ा samosa really worth the hype? What is the scene of lectures in this college? Do we really need to maintain a good attendance? Or notes का क्या करना है? Do we need to make notes or can we get good notes from our seniors? Or what about the previous year questions? Will those be repeated in our times or can we get in some assistance from the previous year questions? And most importantly, what do our seniors have to say about all this? And most importantly, कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते कैसे हैं VGTI में? So, to answer all these questions, we have come up with the idea and an app called as the Explore VGTI app, right? That our app aims to answer these basic questions for freshers as well as seasoned VGTINs, along with our two important features, that is the seniors advice section and the notes and PYQ section. I'll hand it over to Rishi. Yeah. So moving on to our app. Firstly, the user needs to create his or her account by signing up. Users are divided into basically two categories. One is VJTI students and non-VJTI students. Our app mainly focuses on VJTI students, but we have included the provision for non-VJTI also. So the two sign-up pages for both VJTI and non-VJTI students are as follows. The difference between them is that VJTI students need to sign up with their VJTI mail ID and the non-VJTI ones with their personal mail ID. Also, a field of registration number is compulsory for the VJTI ones. About the branch, we'll discuss it later. And the routing between the two pages can be done by this button. The authentication after sign up is done by Firebase. Here you can see all the users which have signed up till date. Then during sign up and login, we use Firebase for authenticating the user. Once the user enters his or her details, the Firebase sends a verification link to the mail ID provided by the user. After clicking on the link, once Firebase sends the mail ID, it looks like this from the Explore VGTI team. After clicking on the link, the window will appear on the browser saying that your email has been verified. Now the user returns to his app and clicks on done. He will return to the login page. The login page is further divided into two parts: VJTI students, non-VJTI students. The user here needs to enter the registered mail ID and the password he had created during the time of signing up. The user will now be taken to the dashboard view. Moving on to the dashboard view, the dashboard for VGTI students looks like this, and the dashboard for non-VGTI ones look like this. For VGTI students, we have seniors advice, notes and PYQs, and location within the campus, extra. And for non-VGTI ones, we have only static pages. Then talking about the sidebar displays the logo of VJTI, then name of the user, his email ID, the option to view his profile, link for the app, contact us page in which we have the contacts of us, that is developers, then log out. Moving on to the user's profile. The user's profile looks like this, in which all the details of the user are taken. During sign up, we take the first name, last name of the user, registration ID and mail ID, also date of birth. The other details like year, that is year, branch and gender are derived from the registration number. For example, if the registration number starts from 21, that is 21, so his year of admission is 2021, so he is currently a second year student. If it is 20, then he's a third year. And branch, the branch code decides, that is 070908, that decides the branch. Then gender is 9, the 9 के बाद branch code के बाद अगर 0 है तो he is male and 1 है तो female. And then for DS wise, as DS wise मतलब जो ये साल एडमिशन किए हैं 2022, their registration number, the third last digit of the registration number is also 9. So the DS wise, even though their registration number starts from 22,
They will not be categorized as FYs. They will be taken to the. They will be year will be displayed as DSY. Then we have used MongoDB for storing the users' details, notes and PYQs, and seniors advice, which we will discuss later. And you can see we store ID, name, mail, registration. Branch is also derived from the registration ID, and password is in hash code and date of birth. User also gets the provision to update his or her details. Again, he cannot change his branch because it is again decided by the registration number. Then contact us page, as I told you earlier, the we get the GitHub and LinkedIn links of us, and we have specially mentioned special thanks to the developers of VJTI maps, which we will discuss later in the slideshow. Then moving on to the static pages of the app about VJTI, it contains all the information about VJTI, its history, and the campuses, that is Baikara, Matunga, etc., and how to get VJTI. As VJTI is one of the top engineering institutes of not only Maharashtra but our nation, and it is the dream college of all the CT aspirants. So here is a quick advice, or that is how to get admission. Moving on to ours. In extracurricular activities, we have a list of all the clubs and committees of college. By pressing them, which will open their link of the respective website. On the right, we have VGTI map, which we will talk later. Notes and PYQs. Is there someone very sincere in a class who attends all lectures and takes all the notes that she has written during lectures? What if all these notes and in addition to that previous year question becomes available in a single platform? Yes, less time for searching the notes, more time for study for exams. Don't worry, the notes and PYQs section of our app will help you find all the notes and PYQs that your fellow mates, seniors have uploaded. It is a feature of this app which is inspired from the healthy spirit of contribution. It enables users to contribute to a college open community with some helpful notes and PYQs from the subject toppers, which proves to be a key factor for any student to succeed in exams. Additionally, it will also help in building the spirit of contribution, which eventually helps in lifetime. On the left, we have the notes view where all the contributed notes and PYQs will be visible to the user. And using the plus sign below, you can add notes and PYQs into the app. The update notes lets the user to update the notes that they have contributed. The delete notes also lets the user to delete their notes. Location within the campus. It's the most fancy, difficult to implement, and extremely needful feature of this app. The hardships that we all faced during the initial days of our college in search of various landmarks inside this widely spread college was a very painful, and thus we came across this idea to make such a feature which will help existing as well as coming generation to find the best suitable path from point A to point B. As said earlier, it was the most difficult part to implement, and as the deadline was ticking, and surprisingly, a week before the deadline, we saw posters of VJTI maps in the campus, which was created by a seniors from 2023 batch, Mr. Ravi Maurya and Miss Sara, which had a match with our vision. And after a chat, we did got the permission to route the page to VJTI maps. But still, it didn't completely solve our problem statement to implement indoor positioning system for live traffic monitoring in a campus and suggesting the most shortest route according to that. So we would like to contribute with our seniors on VGTI maps as well. Currently, we have a similar alternative for locations within the campus, wherein we have a schematic map of VGTI along with few markings of famous landmarks, which may help user to locate it and reach there according to his preferable way. Seniors Connect. It is the most interactive feature of this app, wherein the user can interact with students across various years, branches, all together in this chat box. A healthy environment filled with diversity, where seniors can help juniors solve the doubts and queries like how to study for ESCs, how to balance committee and academics, आपके notes मिलेंगे, कौन सी faculty कैसी है, etc. etc. to each other. Subsequently,
strengthening the bond among each other. Here you can see seniors' advice in action. A junior curiously asking a doubt to which seniors answering his doubt. And on the right, you can see the information of the participants in the group. Our motto for this app is by the seniors for the juniors. Okay, so wondering why did we choose this light orange type color for our app's theme, right? Remember the color of walls of main building of VJTI? The app's background color is similar to the walls, and the color of text and some icons is similar to the roof of the main building. Urs, can you conclude? Then I will show. Thank you for all seniors to who has helped us in making this app. And now Ruturaj will continue with the live demonstration. So, yeah. I will join through my mobile. Sorry for that. So I'm now sharing my mobile screen. I guess it is visible. Is my mobile screen visible, everyone? Yes, it is. Sure. So this is our login page for VJTI students. This is for non-VJTI students. Then the sign up page for VJTI students, and this is for non-VJTI. The button in the on the top we can route through that. And so I will show a demo for signing up with VJTI students. So enter first name, last name, date of birth, VJTI mail ID, then registration number. Branch doesn't matter, whatever we select here, it will show in your profile, which is based on your registration number. Then password, wait a second. I will build it again. Oh, sorry for the. So after logging in, this page appears. So this is the dashboard. This is the sidebar. For sidebar, we have four options: view profile. If you want to update the details, you can update it through this page. Then contact us page. Here we do have our help.explore VJTI mail ID, where users can
give us any feedback or any complaints regarding the app. We have a logout feature, the seniors advice page, then the participants view, then extracurriculars page. When we click on any committee, it opens the website or Instagram account or the LinkedIn account. Then notes and PYQ section. As we saw, we can insert notes, the time, email, the time, mail, and the name. It's generated automatically from the user's account. Then notes, second year, subject, PDC, topic, anything we can write, and description of notes, links of notes, and then if we click on insert, it gets inserted here. And if I want to show click to view, then only VJTI account can access the notes. It opens. Oh, sorry. Then updating notes. Here I created this note and I can update the notes which I have uploaded, not others. Delete, same process. So I am deleting the note which I created just now. Then this is our refresh page, refresh button. Then about VJTI, these all are static pages. Location within the campus, it routes to the VJTI maps. That is, if you click on open, it opens this app created by our seniors. Then this is information regarding CET and map of VJTI. Yeah. And yeah, so I will also uh, am I speaking now? On my laptop screen, you can see the Firebase. That is, when I refresh it, you can see the emails which have already registered and the MongoDB database, all the users information, then the seniors advice ke messages, and notes and PYQs. Yeah. Great work, team. Would we have any questions from the app dev mentors? Ravi, Harsh, Soumitra, Tushar, and also Ameya, who has joined the mean recently. Hi, am I audible? Yes, Ameya. Yeah. So great work, guys. The app looks very functional. I can see most of the features are there, which is a good sign. Just out of curiosity, can you, how many people are in the team? Is it three people team, four people? It's 3. Okay. Have you been using Git or GitHub maybe to host your code? Sorry? To collaborate using code, right? Are you Yeah, using yeah. GitHub? Yeah. Could you maybe show that GitHub page maybe? Yeah.
One minute. Also, one more thing. What tech stacks did you use? First, can you please answer? I will join through my mic. Tab tak. Sure, sure. For tech stack, we have used Dart and Flutter. And for backend, we have used Firebase. And for database, we have used MongoDB. Okay. And this MongoDB, where is this hosted? Uh, is it hosted locally? No, it's not hosted locally. Okay. Do we have any more suggestions or doubts, Harsh? Can you please repeat the first doubt that you asked, Amir, please? I would like to see maybe the GitHub. GitHub link. Yeah. Or maybe you can just post it here. I'll just have a look later. Not an issue. Should I post the link to the GitHub? Yeah, sure. That's fine. Okay. One more question. Have you tried to dabble into the notification system, maybe? Notifications or something like that? Yeah, I'll show share. Okay. Yeah, the about the notifications, it is we have included it in the future. Okay. No worries. Still, it's a good start for a project. And that's it for me. Thank you. ऑल्सो गाइज अगर मतलब तुम्हारा प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा है तो तुम लोग ना एक बार ये प्रोजेक्ट शेरोले सर के पास भी लेके जा सकते हो क्योंकि इसमें तुम लोग ने ऑलमोस्ट सारी चीज़ कवर की है वीजेटीआई के रिलेटेड तो मेरा ये एक सजेशन रहेगा कि तुम जाओ उनको और एक बार ये प्रोजेक्ट दिखाओ तो वो शायद वो प्रोजेक्ट होस्ट भी करे सो एक बार देख लेना Sure, we'll do it. ये शिरोले सर कहाँ मिलेंगे? अपना CSIT का जो HOD का ऑफिस है ना वहाँ Okay. Sure. Great work, team, and great work by the mentor Ananya. Let's move on to the next team, Team Agromart. Thank you, everyone. Aishwarya, if you could introduce your mentees. Hello, good morning everyone. I am Aditya Maga and I want to present my application that is Agromart. So should I start presentation? Yes, sure.
Aditya, you are not audible. Hello, am I audible now? Yes, you can continue. Yes. So the project. The name of my project is Agromart. It is a Flutter app which helps the consumer to get fresh food directly from the farm, and at the same time, it provides the farmers the opportunity to directly reach the consumer, eradicating the multiple layer of businessmen with their commissions. So this was the project created by me and under the mentorship of Sanket Hake and Aishwarya Zadav. So the main motive how I got this idea of the application was I have seen farmers closely, so I was aware of the problems they faced in their life. The biggest problem I believe they faced was even though putting 100% of their efforts into the farm, they were not able to get what they deserved. The reason for this was the long business chain between the farmers and the consumers. Most of the businessmen made profit at different level of this chain, making the product costly for the consumer and generating less income for the farmers. So I wanted to create a link between the farmers and the consumers so that the both of them understand what actually the market can be when the grower, that is the farmer, and consumer are brought on the same platform. So I will present my application. So as a consumer or a farmer, one has to register, that is provide the details. Here the data of the user is stored at the Firebase and further used for the authentication of the user. Now the data stored in the registration page is used in the login page for the authentication of the user. So once the user has logged in, now we will look the application in two parts. So now looking from the consumer's point of view, here the consumer gets the idea. Looking at the homepage, the consumer gets an idea about the items provided. If the consumer has a particular thing in mind, he can quickly click on the wheat, rice icons or particular icons that he wants to, and visit the page which gives the information about the stocks present. Now, if someone wants to buy grocery, he can get into the buy section. Now, this page shows the stocks present. The user now gets the option of the sellers who are interested in selling and the amount available for sale. So it provides the user an opportunity to select out of multiple items, thus making deal profitable for them. As they have more options, we see that the price reduces and it is profitable for the consumer. Now we go to the price page which shows us the price of item. So if we basically go into rice, then the categories of rice, and with their every category the particular prices are shared. So on clicking on that page, we can go to the payment page. So this is the final page of the user where he has to get the payment done for the products he purchased. Now, looking from the farmer's point of view, when he clicks on the sell page, in the home page there is a sell section. When he clicks on the sell page, he gets into the sell here page. So here he can enter the product name, the pin code, his address, the product type, and the amount for which he want to sell his product. And from there he can get the product sold for himself, so that the product gets available for the consumer to be sold. I also wanted this application to be available for the farmer so that they can get benefit from it. So for the farmers, I tried to create a page where uh, current weather information will be provided, where they can check the weather. Knowing the weather conditions, the farmers can plan their plantations more effectively. I also created a page which provides more information to the farmers about sustainable methods of agriculture and advanced agricultural methods, which will help the farmers to provide new techniques of farming with less water, fertilizers, thus improving the productivity. And also, this page will stay updated as time goes. This page provides the information and any updates of the government schemes for the farmers. So uh,
One more page for the fertilizers, recent new fertilizers that cause less soil erosion, less soil problems with effective production. Uh, that page that will be shown on this page. Now, this is the page that provides information about plant health and effective soil management for the farmers. Talking about the future scope, I want to add a page where the prices of the items sold by the farmers can be altered daily as per the demand and supply of the goods in the market. So basically, I want to create a page where the farmers every day they can decide the price of the item that they have put on the application. So basically, the products that they have put on the item will act as a stock. So basically, keeping the stocks, that is the products, as the assets, they will change their items price every day. So basically, this will create the farmers as the main key role in this application. Then I want to create a safe online payment feature, and I also want to extend this application in the fertilizer sector also. uh, at the last, I want to thank CoC for this amazing mentorship program. There was a lot to learn and furthermore to explore this project. um, this project has given me an idea how the work in the software development sector would be. Through this project, I learned that there will be technological changes throughout the time, and I will have to keep ourselves updated. It was my pleasure working with the mentors who were always ready to help at any moment. Once again, big thanks to you all. Yes, so done from my side. So are you guys proceeding for a demo, or is that the end of your presentation? Yes, sir, that's it. I was going to demo for my app, but I'm facing some errors regarding the payment page, so I won't be able to. But I will post my video of my app, demo video of my app, on the Discord error folder. No issues. Great work, team. And if we have any questions or suggestions from the jury here. Yes, sir. I just would like to ask you that if I could continue, if you could ask the mentors to continue helping me, because I want to really make this project work uh, on a level where the farmers will be able to daily change their prices of the product looking at the amount of products present on the app. So I would require their mentorship still further. Yeah, sure. Aishwarya and Sanket, if you could continue the good work, it would be great. Yeah, sure. And the use case of this project is pretty good. You can take it to any hackathon which has agriculture as its problem statement and add some of its features. Okay, sir. Sure, sir. Ravi, if you have any suggestions. First of all, like how many members are there in your team? So we were four members, but actually three of them quit, so I finished the project. Oh, so you did it all alone? No. Yes, sir. Great. Thank Nice. you, Like sir. the project is really good. Like I don't have any feedbacks for now, but like great work, guys. Thank you, sir. Great work, team. Great work, mentors Aishwarya and Sanket. Let's move on to the next team, which is Team Ace Developers. Uh, Hello, am I audible? Yes, you are. Hello. Yeah. So good morning. This is Anu from Ace Developer. So today, finally, as we have completed our CoC project, and we are here to present it in front of you. So I hope you like it. So let me share the screen.
Sorry, it will take some time. Just 2 seconds, okay? Till then, I would again like to welcome all the veterans here, Ameya, Deep, Ankitesh. If you could unmute yourself and give a short intro to the juniors. Ankitesh, you should Yeah. start. Actually, I can go first. Sorry. Yeah, you can go. Yeah. Uh, hey guys. Is my screen, can you see my screen? Yeah, Aparna, your screen is visible, but if you could wait for 2 minutes for the Yeah. veterans to introduce Okay, themselves. yeah. Yeah, no problem. Yeah, I'll continue. So, I think a lot of you might not know me. I'm Ankitesh. I was one of the original co-founders when we started the CoC. I think back in 2018, if my memory is not weak. Yeah, 2018. So currently I'm an SD2 at Amazon. I'm in Seattle. So I work in Seattle itself. I did my masters 2 years back, and now I'm working on SSD. Yeah. I saw the timesheet. I saw the projects. You guys are doing a really good job. So I was just curious to join this meeting. Looking forward to all your presentations. Thank you. Okay, I will go next. So, uh, this is Deep here. I was like 1 year after like Ankitesh passed out. So I'm from a 2019 batch. Currently, I am working at Swiggy, and like I have met few of the guys in the college hackathon. So just wanted to join here to see like what all things other than like are happening here. Okay, hi, hello everyone. Good morning. I'm Amina. I was like in the COC after the graduate. COC has been very uh, dear to my heart. Like coding, I can say 99% of coding and all things. I got the inspiration to learn from the COC, doing projects, doing goofing around, doing code, etc. Right now, I'm working in Barclays, Pune. Uh, and yeah, it's fun. It's very nice to see fresh projects in perspective of what's happening in college right now, and especially this inheritance, given that it's probably like one of the first or the starting projects for you. These projects, when you go look back, you will be able to see basically how much you have grown, how much you, how later when you like in the final year, maybe after working, it will be very. These projects will you will see. Oh, I was like I started off from here, but now I know a lot. Like so, don't worry about if you feel that projects are like you might have not implemented something or you feel like you can still do more. There's you have a whole like 4 years ahead, 3 years ahead of you. So uh, wish you all very much luck and I'm very excited to see your project. Thank you. Thank you so much for that. I would like to add one thing that this year, when I met Deep and Kevan as the judges in one of the hackathons in the college, a lot of the things which we take for granted, the current committee members, was something which you guys had struggled and built upon for COC. So thanks a lot for them. We are grateful to you. And now let's start with the presentation. Team East Developers. Yes. Okay. Yeah, so I will share this one. Can you see the screen? Is my screen visible? Yes, it's visible.
Okay. Okay, this is Anu from Ace Developers team. So, our team comprises of Aparna Bhutada, myself Anu, Chanchal Bhairani, and Purva Gaikar. So, we worked on the domain of app development, and in this, we tried to tackle a very serious problem that almost every student must have faced in their college time. And so we decided to make an app so that it can be very useful for them. So starting with the introduction of our app, the name of our app was Kitab Khana, and the sulooks, the motivation that we got under this Kitab Khana app was that giving is not about donation, it is about making a difference. And this was the very basic footstep that we took and started with our project. So, talking about the project, Kitab Khana is an app where one can sell, buy, rent, or borrow books from anyone. This is a platform where both the seller and the buyer can meet and buy things or sell things. So, in short, you can say Kitab Khana is a pocket library. Moving on, uh, and diving deep into our project, basically comprises of two simple things, that is collect and donate. In collect, the customer can take books that are available on our app, and in the donor option one can share one can sell its book or rent its book by uploading its pic and about the information about it, where does he live, about the price if you want to sell it, and even he can even rent it. So basically our project is about these two buttons, collect and donate. Then how does our app work? So in it's simple app, and like any other app we just need to download it, log in or sign up with an email id, choose the option whether you want to buy a book or donate a book, and after that we have a very simple procedure, and it is a very user friendly app. You will be able to use it without any difficulty. Now the sources that we used to build our app was for front end it was Flutter, and for the back end where we actually faced a lot of problem was the Firebase. Now uh, I request Purva, my teammate, to proceed further. So, like any other learning process, we also faced a lot of problem, but the majorly things which we faced were in backend. So, as if someone wants to donate the book, he needed to upload the image of that book in from our app. So we were storing that image in storage, and in our homepage we needed to display. We need to fetch all the image from storage which were uploaded by all the users and display it on our homepage. So we were so before displaying that on homepage, we were checking one condition, that if user I we were accessing all the image through an unique id, and if that unique id is null, we were displaying that data not found. But due to some error, every time we were trying to fetch the data, that unique id was returning as null, so data not found was being displayed. So this is an problem on which we are still working on with our mentors. So hoping that it will get solved soon. Now, demo page would be presented by Chanchal. Hello everyone. Now I'll be showing you the demo of our app. I hope you see my screen. So our first splash screen, and this is
login page. I'll enter and here is the first page where we have to select what we need to do, donate or collect. If I go on the donate button, then here comes an option for browser, click an image. We can click our image or browse from our gallery or any drive, and we can get the image, and then we can click a picture or something this, and this image will go into the storage Firebase, and then we can do next. Here we have to add the details about our book and the seller details and contact details of the seller. Then we can donate, and here comes the screen for donated. Next is the collect option where we can select collect, and we can select the stream in which we want. I select engineering. Then here the books will be displayed which are uploaded by the donors, and then we can book. This is a mock book. We can then click on buy. And here we have kept an option of pickup for now. Pickup, and then you have to add the details. It will be placed. We can pick up. We get the direct communication between the seller and the donor, so they can have a direct contact and select take the books from them. Now Aparna will be continuing. So now coming towards the part where we choose the app, because going to next class brings the task of finding and collecting new books, and it is not everyone is not comfortable while communicating. So this app gives them a platform where they can buy or they can just collect the book which they want. Also, there is a direct contact between buyer and seller, and the basic thing which we have learned from our childhood is sharing is caring. So sometimes people just want to help their juniors with the books, but due to some lack of contact, it becomes hard. So this is the best platform for them to have a book. This app is very easy, provides very easy search. We will try to provide an easy interface to the user where searching books will be super easy. Also, this is cost saving. We are not taking any type of money while donating a book. Also, user can get books on rent or they can register them as a member, by which there will be there will be special access on various books. Coming towards the future scope, it is a one-stop store to have books of mostly all the streams like arts, commerce, science. And also, when you are done with your semester, you usually sell book. But instead of that, you can donate them to your juniors so that it will be beneficial for them. And also, as we are not taking any expenses, it will be very useful for them. Coming toward the last part, I would really thank you. I would like to thank all the members and also our mentors, Sanket Hake and Tushar Shibhate, who helped us a lot during this 3 months of journey. Really, we learned a lot while doing this project. It helps us to learn various new things. And also, there are some features which are not there in the app, but we will definitely try to work on that and finish it. Lastly, thank you so much, team, for giving us the opportunity to represent our project and help us. If you have some questions, you can ask. Thank you so much. Great work, team. Veterans, if we have any suggestions and doubts from your side. Actually, our team faced a lot of n number of problems in Firebase. मतलब the backend was backend वाला काम was a real task for us. Front end was easy, but backend took
lot of dedication and hard work from us. And the last within the last week only we fo- entirely focused on the back end. And as you see in a project, the back end is not yet completed, so we need to work on that. Sorry, I had Please, mentor, uh, give us some suggestions so that we can improve our app. I had one question. Who maintains the inventory of this book? Like, is it whoever is uploading? Okay, hey, I'm gonna give this book away. So, like, how is that communication established between them? Actually, while the person wants to donate the book now, he will upload book details as well as the address. So if I want to get that book and the address which uh, he will upload his number, so I can contact him, and if he stays nearby and if it is possible by me to collect it by myself, so I can collect it by myself, or I can get it delivered to my home by shipment agency. So customer has two options in that. Okay. Yeah. Thank you. So I had a question. The thing you said about the shipment thing. So how exactly is that going to work? Like, have you worked on that? Till now we have just like given an option to customer, but we didn't work on that as of now, so we still have to do. Okay. Just one suggestion. I think it has been mentioned in chat as well. If if you are having to fight with Firebase, right, you don't want to fight with the framework or the code which you are using. So if in future you want to continue with project and it seems like it's a hassle to continue on Firebase for the backend, you can. I would suggest to switch to maybe AWS using Lambda, or just using a normal backend like using Express.js or Java Spring or something like that. Uh, it's basically at the very simple core of it, your backend, right? It's just you're uploading your code, which will take an HTTP request and your response. So that I feel as long as the backend achieves that, your majority of tasks is done. So it's like eh, rather than going to the complexity of using Firebase APIs, how that API works, and banging your head towards that. Uh, Even a simple backend, if it does the job, even that's fine. If it's competently built, if it can later on add on features to that code base, it's totally fine to have a normal backend as well. It's just a suggestion that if in future, if it ever comes to the point that it's getting too much, Firebase is using too much hurdles, uh, do have that in mind, because no framework is perfect. Every framework has pros and cons, and uh, so you use what use you the easiest way to implement. So that's my research here. Yeah, we'll surely try to implement that. Great work, team binary. This is Ace Developers. Okay, sorry. Team East developers and their mentors, Soumitra and Utkarsh. Sanket and Tushar Shibate. They were changed, I think, then. No, we are the mentors for Team Binary. Okay. So team binary is next up. My bad, my bad.
Except this team binary. Thanks a lot, team Ace developers. Nice. Thank you. Hello, I'm the leader of Team Binary. Shall we begin? Yeah, you can begin. Okay, so my teammate Mukund will now present his screen. Chirayu, can you please present the screen? Okay, so hey everyone, this is Mukund Gohil. Today, me and my Team Binary, are going to give you a great presentation about our app which we have made in last 3 months. So this app name is Hostel Hive, and it is a PG and hostel finder. This The idea of this app came from a small story that me and my friend were outside the college, and some of the students came and they asked us about the PG and hostel inquiries and all. When we were pretty hopeless at that time, we didn't knew anything about it. So we decided that through this platform, let's make something which can help everyone finding these PGs and all. So next slide, please. Next. So this is the main motto of our app, that we want to help students and professionals to find a one-stop solution for their residents nearest to the institute. So initially this app contains just the nearest to the institute, means it's just to the VJTI domain. It will have the PGs with reference to the VJTI domain. Next slide. So the victim of this problems are students, and we have the solution with our app called Hostel Hive. Next slide. So the technologies that we have used in the front end are Dart and Flutter. Back end is Google Firebase and the API of Google Maps that we have used. Now Rohit will show you the demo of our app. So I would like to present my screen. So my screen is visible, right? Yes, it is. So this is the login page. Enter the data. These are the options available for the hostels. First, we have our VJTI hostel. Here's the description. Have the terms and conditions for it. Facilities and accessibilities provided. Availability of rooms and fees. This is the map. Google API is synchronized.
can view the distance from our college. When the user has to input his data, he can input it from these fields and submit it on the database. So currently this is the basic functionality of our app, and we are thinking of a few future modifications to make it better and user friendly. Chirayu, move on to next slide. So regarding the future aspects, we are going to add the following features. There'll be an option to add PG for the owners. They can upload the image, input the details and give the location on the map. Then details indicating the vacancy. This is one of the major concerns. I'll share my screen. So regarding the vacancy, students would be able to fill up a form. There will be a page regarding this. They will be able to select the room size in the given PG like 1 BHK, 2 BHK, and number of people they would like to live with like 2 or 3, and they can enter and they can get the amount of rent they would have to pay monthly, and then there will be a current status of the number of rooms which are occupied, the upcoming vacancy, and the rooms that are already occupied. So when the person clicks on not occupied, he'll get the list of rooms which are not occupied. On upcoming vacancy, there will be details regarding students from this college and studying for this year, and they are going to vacate the room. So this would help a lot of students which face issues like they are staying in PG hostels where only two partners are there. One is a final year and the second one is a third year. But the next year, when the final year leaves the hostel, then he has to find a partner for himself. And then the occupied rooms, those will be shown. These are the basic future aspects. Now I would hand over to Chirayu to conclude. So basically, we started in November and December the learning phase, and then in January, the complete month, we were implementing all our knowledge in this. We used, as Mukund said, the Firebase Dart uh, and Google API for the same. Even in the February, we are planning to add more features as Rohit mentioned now, like the dynamic features. Even we have implemented a Google map in it that shows the location of the hostel and PG, and in April we will be having our final project completed. This is our team. I am Chiray Badguzar, Rohit Parke, Sahil Dongre and Mukund Goyal, and our team members are Utkarsh Patil and Soumitra. Sahil Dongre was in this meet, but he is facing some issues of network connectivity. That is the reason he didn't speak up in the presentation.
All right, great work, team. May and Deep, if we can have any suggestions or doubts from your end. I would say like nice work with the like the future aspect. You did the layouts on the like some software you have used. So Figma. Figma, like that was a good point. Like we used to never do that, but like to show future scope and we are thinking in that way. That was a good point. Mm, rest like again uh, Firebase, like you could have like directly use some backend languages which would have gave you like more flexibility on implementing things and all those things. That's it. We'll surely work on it in future, in this month. Mhm. Currently, we are at the minimum functional app, and now we are trying to make it better and better. So basically, like you would first design things, and then like if you are using Firebase, then and if you are planning to make it a good project, then you might have to change the entire backend, right? If you want to move away from Firebase, so like from start only, we should think of what alternatives would be a extensible solution. Okay, we'll surely work on it. And for me as well, like I like the Figma thing. Do try to explore Figma. It's for everyone. You have used it for planning and all. It's also used for basically your having design patterns. Basically, your application should have a coherent theme to it. So tools like Figma and I guess there's Fire, some shift, Zeppelin, I guess. Zeppelin. These tools kind of they allow you to have a consistent thing, and then you can just import those styles into your application. Then you don't have to worry much about styling. Styling has been a very big issue. The reason why things like Bootstrap and all work so well is because they remove the headache of uh, for out of you for thinking, oh no, what thickness to have or what size of fonts or any. So if that can be made consistent throughout the app, uh, I mean, using these sort of design tools and then implementing them in them, that would be great. Other than that, I saw that you are trying to implement Google Authenticator. That's very good. Uh, Given this project, it's like a learning project, right? It would be good to every now and once and now just try. Okay, you have done this normal login username password thing, but then how to implement auth? That is a new challenge. Like you get to learn sort of that sort of stuff. So that's great. Good to see that. And finally, if you have a plan for what features and all to implement, uh, you uh, have it a very have very clear goals. Don't kind of say, oh, I'll implement this and I'll implement that, and uh, there are hundreds of things you can add in an app. Be very clear of like if you have some deadlines, what you have to do in like, what features you are going to prioritize and kind of like you've shown you have goal of April, I guess. So by April, I hope you're able to achieve maybe let's say even 2 or 3 features. Even if say I will implement one feature, and one feature you should be able to implement in with the confidence saying that oh this is the best way I could have implemented or this is very well done by me. So very much good luck to you for that. Thank you, and definitely we'll do it. Thanks for the valuable suggestions, Amay and Deep. So if no further suggestions, then we can move on to next team. I guess it is Marshmallow. Team Marshmallow is yet to join. Their slot is yet to begin on 12 p.m.
Till then, if we have any suggestions from Ravi, Yeah, sure. Uh, yep, like I don't have feedbacks to give, but yep, great work. Like, yeah, it was really nice. The future scope looks like really good, so you could work on that and implement a lot of things. Yeah, thank you. We discussed regarding it with our mentors, and they said that they will completely coordinate with us. Who were your mentors, by the way? Soumitra Kant and Utkarsh Patil, both are in TYIT. Okay, great. we have suggestions from any of the TYs present here, Harsh, Saili, Smith, and obviously Soumitra. नो, ऐप तो काफी अच्छा था. I'll just ask a random question, maybe to all the inheritance people, or even to TYs and anything. Do you guys like to use Git? Git अच्छा लगता है तुम लोगों को use करना? कितने को Could you अच्छा please नहीं repeat your लगता? question? I was basically asking, do you guys like to use Git and GitHub or Bitbucket or whatever? Yes. How how many of you don't like it? कोई है शर्माओ मत. It's मतलब शुरुआत में it would feel very counterintuitive क्या git command add वगैरह commit कर रहे हैं. Uh, Inheritance में it's like I guess the first time where you use like git to on a large scale मतलब at least project wise. और अगर 4 लोग काम कर रहे हैं सबसे बड़ा चीज तो आई विल से कि पहला सबको डर लगता है कि मर्ज कॉन्फ्लिक्ट वगैरह है तो वो ब्रांचेस का रहते हैं. I hope this does not scare you and you can cope up with it and आगे आगे जाके you will be able to kind of master it because live projects, right? These projects which companies and all develop, they many people work on it and there's like a whole lot of things happening, CI/CD pipelines and all, where Git is very integral and you will be surprised बहुत लोगों को seniors में भी नहीं आता. There are industry experienced people which they struggle with Git branching वगैरह. But if you are fluent with it, right, you will तुम्हें ऐसे 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 तुम्हारा efficiency बहुत बढ़ जाता है. Doing multiple things at once, having proper reviews वगैरह, tests, बहुत कुछ तुम देखोगे आगे आगे जाके कि it's like if तुम जैसे जैसे तुम वो इतना कंफर्टेबल होते रहोगे तुम्हारा कोड लिखने का इवन तरीका भी लाइक अगर तुम फीचर वगैरह काम कर रहे हो फोकसिंग ऑन वन फीचर और हाउ टू स्विच बिटवीन टू थिंग्स अगर तुम्हारा हाउ टू प्रायोरिटाइज वर्क विदाउट अफेक्टिंग कि अरे ये बीच में अटक गया लाइक हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स वो ये हो जाता है लाइक ऑलवेज ईमेल करना या लोगों को व्हाट्सएप करना कोड दैट फील्स अ बिट you know lucrative but तुम गेट से कर पाओगे तो it is always what I've seen is it's always more convenient. So that's like 2 cents stuff. Uh, Hello. Thank you for those valuable suggestions. And one thing which I would like to inform is that this time we had focused much more on Git than the previous editions of Inheritance. The first workshop during the Inheritance was the Git and GitHub workshop as well. And we had encouraged all the mentees to maintain their repos, collaborate using branches, and the final submissions were taken on GitHub as well. that is very good, that is very nice to hear. uh, because I remember मेरे time पे we did not or at least we used it very less and it was a haphazard. But looking back, yeah, now I cannot think about coding without Git. Like I almost cringe when someone says कि email कर दो code because
yeah, अभी आदत ही हो गई है kind of. So anyways, yeah, that's good to hear. You guys are getting exposure to it at an early stage. Is the next team Marshmallows ready yet? Do we have any of their mentors present here? Amog, Ritika? Drumel, if you have any updates. Actually, Team Marshmallows is joining in 2 minutes. So basically, they were bit uninformed. Like the meeting, their meet was preponed. So they're joining in 2 minutes. Yeah, sure. Till that time, I think if we can discuss a bit about this year's inheritance, Harsh, Smith, Siley, we could brief a bit about this year's inheritance to Deep, Ameya, and Ravi. Smith, Yeah, would you like to so take up? yeah. So this year, as it was offline, our inheritance was online. But as this year was offline, we had a huge number of registration, like 75 teams registered. So that is 75 into four. So as each team has four members, right? So we had there were not enough mentors to take in all the teams. So we had to shortlist the teams. So we could take up only 51 or 52 teams. So the participation was great this year. Also, Also, shortlisting students was from many quite other difficult. branches. Continue. I was just saying that students from many other branches also participated this year, like many textile production and even other EXTC and other branches were participating. So we were giving them more priority to facilitate their CFI, I mean program. Also, the ideas proposed by the juniors was really great, and it was very difficult for us to shortlist those teams. Like we decided out of 75 teams that we will be mentoring only 50 top 50 teams based on the ideas they proposed to us. But what happened is almost everyone had a very great idea. So what we decided is we will be allotting specific mentors to the top 50 teams, and the remaining 25 teams uh, is open. Like every TY core can mentor them. They can ask doubt on a Discord server, and anyone who wants to clear their doubts can clear them over there. And there was two teams which was included after mid evaluation. Like we decided that if some of the teams in the top 50 quits in mid of the inheritance event, then we will be promoting some of the teams to the top 50. So there were two teams which we promoted after the mid evaluation into the top 50, and they really worked great. So that was all. And in fact, there are some teams in the presentation schedule who still haven't been allotted mentors officially.
but they did some great work. So Yes, we actually, kept the we now spirit have of the community open this time as well. And this time we had also shifted to Discord as our main communication platform. So if you want to join the Discord server, it would be great. And yes, seniors and alumni, they are always ready for help, but we were a bit uh, hesitant to take help from them because the event is totally run by juniors, right? So this was something which we wanted to inform the veterans about. Ki as the community is growing, there are some compromises which we might have to make. And if there are any suggestions from your end as to how to handle that scale, it would be great. Meanwhile, I think Team Marshmallows has joined. So Rajat and team, you guys can continue. Okay, let's start. यार ये ग्रुप पे आया है कि एसी लैब आ जाओ। ये इतने बड़े कॉलेज में एसी लैब कहाँ पे ढूंढूं? क्या तुझे पता है क्या करना है महिमा? नहीं यार मुझे भी नहीं पता बट वेट आई चेक ऑन वीजे कनेक्ट। ये वीजे कनेक्ट क्या है? तुझे वीजे कनेक्ट वीजेडीआई का ऐप नहीं पता? VJ Connect. VJ Connect is an VJTI app. Uh, I'm audible. VJ Connect, VJTI made easy. Our aim is to simplify the hectic student lifestyle of VJTIans and giving them the right tech support. तो यार तुम लोगों को भी फर्स्ट ईयर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही होगी। अपने सीनियर्स को तो यार कोविड की वजह से घर पे बैठना पड़ा है, उनको भी फर्स्ट टाइम कॉलेज आने में प्रॉब्लम रहा होगा। तो यार तुम लोगों को अब हमारे ऐसे विजिट ऐप में क्या चाहिए? रजत, मैं जब पहले कॉलेज में आया था ना, तो लाइक मैं पूरा कंफ्यूज हो गया था कि ये केमिस्ट्री लैब कहाँ होगा, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट कहाँ है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में मेरा क्लासरूम कहाँ है। ये सब में तो मुझे ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम है। मुझे तो स्टडी मटेरियल मिलने में बहुत टाइम लगा एंड यूट्यूब लिंक्स टू माय गॉड आई हैव टू सर्च अ लॉट। एंड जब से मैं ऑफलाइन आई हूँ मैं तो वही सोच रही हूँ, अगर अटेंडेंस फोन से हो जाता तो कितना इजी होता। ये व्हाट्सएप ग्रुप में भी इतना स्पैम होता है कि जो भी इम्पोर्टेंट वर्कशॉप्स होते हैं इवेंट्स होते हैं मिस हो जाता है। सो उसके लिए if कुछ मिल जाता तो इट वुड बी ग्रेट। हाँ, और ये सब इतनी सारी कमिटीज है अपने कॉलेज में, बट कौन सी कमिटी एग्जैक्टली क्या करती है वो भी पता नहीं चलता था। अरे अरे मैंने तो सिर्फ प्रॉब्लम मांगा था आराम से। But don't worry, we got you covered in all these things. So let's get explore our own VJT app, VJ Connect. So let's proceed to the demo. Sakshi, you can stop, and Harsh, you can start immediately. Harsh, start. So this is a Yes. VJ Connect का होम स्क्रीन। यहाँ पे भी आप डिजिटल लाइब्रेरी, न्यूज़लेटर, कैलेंडर, स्टूडेंट डिटेल्स, VJTI मैप एंड एकेडमिक्स। डिजिटल लाइब्रेरी में we have, you can choose your year, first year, second year, and according to that we have sorted books and subjects. Newsletter में you'll get to know more all about the committees which are in VJTI. यहाँ पे क्लिक करके you can get to know more about the committee. Then we have a VJTI map जहाँ पे
VJTI का मैप देंगे और यहाँ पे हम डिपार्टमेंट वाइज मैप्स भी ऐड करेंगे। देन ऐसे करके स्टूडेंट डिटेल्स और कैलेंडर्स और एकेडमिक्स का पेज भी हम लोग आगे बिल्ड करने वाले हैं, जहाँ पे हम लोग स्टूडेंट लॉगिन और प्रोफाइल लेके उनके डिटेल्स प्रेजेंट करेंगे। Sakshi? या सो फिर हमने एज हर्ष ऑलरेडी टोल्ड हमारे पास पूरा क्लब्स का एक इंफॉर्मेशन मिनट रहने हाँ। वाला है, क्लब्स एंड हर्ष कम्युनिटीज जो भी हमारे एमुलेटर, पास है। एक मिनट हाँ, हर्ष एमुलेटर बंद हो गया। या सो न्यूज़लेटर पे, तो न्यूज़लेटर पे हमने इसको एक इजी टू यूज़ फॉर्मेट में बनाया, स्क्रोलेबल फॉर्मेट में, कि जितने भी हमारे पास मेजर कमिटीज़ है VJTI में उसको एक जगह पे डाल दिया है, एंड ऑल द information and Instagram page of them, all the mail IDs जो इनके clubs की है उसके साथ हम link करने वाले हैं. And in the future we also plan to add notifications and the latest updates about any clubs and committees जो आएंगे. Suppose there is a workshop, suppose there is an event conducted, तो फिर ये इधर app पे reflect होगा. We've also added a calendar in the app. तो उसमें you can add your events. If you have anything important, कोई assignment का deadline है या कोई workshop है, तो you can add that and you can edit those events and तुम्हारा daily timetable track करने के लिए it's easy. So उसका demo I'll show it at the end of the presentation. And we have added e-library जिसमें we'll provide all the we provide all the materials, PYQs, all the books. So per year के according you can get all the material here, so you don't have to struggle to find anything. या किसी से बार बार मांगना नहीं पड़ेगा ये बुक है क्या, ये सब्जेक्ट का कौन सा बुक है. So I guess अगर हम sum up करेंगे हमारे ऐप को तो basically we have covered most of the things जो एक स्टूडेंट को डेली डेली लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है. From home page where you can see map, like आपके पास सबको पता चल सकता है कहाँ क्या जाना है. And in the future projects we are going to add floor map of every department. Like med department में first floor, second floor, third में particularly एक एक जगह पे. For now we have kept the zoomable one, but in future we are going to add the floor wipe map. And if we talk about more stuff, then we are going to add academic details, which is under the process right now. And in that, we can make a admin, which will be tell at the end of the presentation. But basically, its idea is teachers can also give us a grade and take us attendance, and with QR code also. We have seen and started working on it. Then there is one thing which is we have talked in the problem section कि यार स्पैम के बीच में हमारा मिस हो जाता है कि ये वर्कशॉप है चल रहा है, तो उसके लिए वी हैव सेट एन अनाउंसमेंट समथिंग. सो इफ कोई भी ऐप पे या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर क्लब का कुछ नया वर्कशॉप आएगा, दैट विल बी आल्सो शोन इन द ऐप एज अ न्यू or as a notification. So we are under process of this. Now I will tell Harsh to log out and we can see the login credentials. Harsh. So basically, we have kept login and sign register with VJTI only. So only VJTI.ac.in people can uh, log in into this app as it is VJTI app, obviously. And we have also kept the branch wise also. So if you are using ET or IC or CS, whatever people have, so it will also store the data of every subject wise and branch wise, so you can use that data also for the academic sections. So for right now, if we just sign in, Harsh, sign in with click, just sign in, don't add something, just sign in, just press sign in, the down button. So you can see it is given in the password section that you have to add +6 characters only and the email required. So first you have to register, then only you can
sign up in the app. So at the last, I would request Mahima to show that admin thing. Sakshi, can you present? Yeah, just a moment. So we have already started working on our future prospects. So we have created a home page. इसमें you will get an option to log in either as an admin or as a student. तो student में तो जो अभी था that will be the same. Admin में you will get new options. तो इसमें the teacher can add students का results. Attendance का एक will create. एंड जो कमिटीज के हेड्स या कोई तो वन पर्सन जो भी होगा मॉड्यूलेटर वो एक्सेस कर सकता है एंड ही कैन लॉग इन एंड अनाउंसमेंट्स पोस्ट कर सकते हैं जो स्टूडेंट्स के सेक्शन में डिस्प्ले होगा इफ़ देयर इज़ एनी वर्कशॉप और एनी इवेंट या कुछ भी अनाउंस करना है तो दे कैन पोस्ट देयर अनाउंसमेंट्स हियर so we'll be creating this and we already have started working on it. So like this is our end of the presentation. So till now we have done map, e-library, digital that newsletter, uh, academic sections also, and we are going to work on our attendance section, that announcement one, and we are going to put an a sidebar also, which will contain all the about of the VJTI and the VJTI website, and we are going to put a feedback form because when we're going to implement in this new college, so like juniors can also give us ideas or the other problems we can work and just make their life easy in VJTI. Thank you. So, any suggestions or questions? Anyone? Ravi, Deep. Deep. We already have one from Deep in the chat box. Okay. Why Guys, not? can you answer? Why not integrate the map app which was recently developed? Can you answer? That last thing one, like, can you elaborate your question? So recently, like on LinkedIn, I saw some VJTI map, like a app got created. Like they had this all the features which they were discussing right now, like just for maps. So Yep. Yep. Ravi, you Like only I created created, that, right? and Mm-hmm. so so you could use that. You could create your own, like as you were mentioning in your future scope, floor-wise maps. So yep, you could do Yeah, that. yeah, Nice, yeah. nice Actually, app we by the way. didn't knew about it. Yeah, thank you. Like we actually And didn't know about that. It is already created, but we were thinking like something make which is like GPS only, but in the Vegeta app, which but it is not actually possible for 10 kilometer something. So we were thinking if we're going for floor maps yep, this yep, time. Thank you. yep, exactly. GPS thing, that's the problem I Yeah, faced because that is yeah, the 10 kilometer thing. Actually. Like, any other questions? also who Ravi, were your maybe try to mentors? solve this together. Yes, yes. Yeah, Amog and Deepika. Okay, okay. Yeah, so thank you for all the COC members and everyone for giving us this opportunity to create a own app. Yeah, this was a journey. We learned a lot. I'm very grateful. And it And was very fun. it has actually created a momentum for us, and we'll continue doing projects in the same. Thanks, Team Marshmallow. Great work. Is Thank you so much, Team guys. Elite Entity
ready for their presentation. Team Elite So shall we entity. exit? Yes, yes, you can. Thank you so Thank much. you. Have a good day, everyone. Rohit, it still hasn't joined. The team has joined, but there's a network issue, so he will be joining in 2-3 minutes. All right. Hello, let Rishabh Singh give the access to get inside on this meeting. Not yet. We didn't get anything. Can you just try again? Okay. Also, I think till then we can consult Ameya and Deep regarding their suggestions on the previous discussion as to how do we handle scaling the community more and more. अ, मेरा पर्सनल ईमेल आईडी इसको ज्वाइन करने के लिए एक्सेस दीजिए प्रेजेंटेशन शो करने के Can you please join using the VJTI one? Try using that. लिए ओके ओके Yeah. I mean, जैसे कम्युनिटी बढ़ता है राइट, आई रिमेम्बर कि जो सी प्रोग्रामिंग के जो वर्कशॉप था, यूज्ड टू हैव देम इन अराउंड 3 लैब्स, अलग अलग लैब्स में चल रही थी, एंड उतने फिर मेंटर्स लगते हैं and उतना उतना रिसोर्सेज भी लगता है कॉलेज का. आई कैन सी हाउ इट गेट्स चैलेंजिंग. वन थिंग आई कैन से maybe not at the starting level, but एक जब तुम सेकंड या थर्ड ईयर में आते थे, उस पॉइंट पे maybe have some sort of a like coding group जो तुम यहाँ hackathons के साथ जा सकते हो, like rather than से कि whole community की workshops वगैरह वो तो होती ही रहेंगी, but other than that कि जो community के members वगैरह है, XY DY हो, तुम मे बी 3-4 लोग ऐसे डिसाइड करो, हाँ हम हैकाथन अगर कहीं हो रहा है तो चले जाते हैं, या फिर हाँ चाहिए कंपटीशन हो रहा है चलो साथ में बैठ के देख आजू बाजू के लोग कर रहे हैं देखिए, वो तुम्हें थोड़ा और मोटिवेशन आ जाता है. तुम मे बी तुम अकेले नहीं जाते रिलक्टेंट आवर्स, बट जस्ट सीइंग अदर्स डूइंग गिविंग अ शॉट, और लर्निंग भी उससे बढ़ जाता है. मतलब तुम अभी कोई टेक स्टैक वगैरह कर रहे हो, दूसरा वाला कोई और ये कर रहा है, तो वो काइंड ऑफ ये मिल जाता है कि दो लोग अलग, अगर ऐसा भी रहता है कि मतलब बेसिकली अगर तुम फ्रंट एंड में काफी ये हो, तुम फ्रंट एंड का करते जाओगे एंड फिर तुम्हें काइंड ऑफ, बिकॉज तुम वो प्रोजेक्ट बना रहे हो साथ में लोगों के साथ, तुम साथ में कोड लिख रहे हो, तो तुम देख देख के तुम्हें भी थोड़ा इजी लगने लग जाता है, अच्छा ये ऐसा बना है, तुम वो प्रोजेक्ट के पर्सपेक्टिव से सोच के अच्छा ये ऐसा कोड होता है, साथ में डिबगिंग करके फिर पाइथन तुम्हें टफ लग रहा था बिकॉज यू पार्टिसिपेटेड इन दैट हैकाथन, तुम 4 लोगों के साथ काम कर रहे थे, तो काइंड ऑफ आई वुड से स्मॉल स्केल कोलैबोरेटिव वर्क तुम इंडिविजुअली, बट इट विल बी लाइक एन इंडिविजुअल बेस, अगर वो यू कैन काइंड ऑफ अगर वो बढ़ सकता है कम्युनिटी में, काइंड ऑफ तुम्हें लाइक कोर कम्युनिटी पे भी वो थोड़ा बर्डन हट जाए कि अगर लोग से पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है इंटरनली, वो हमें इंकरेज करता है, तो we can even add a few more people, मतलब जिनको accessible नहीं लग रहा था, but just because they join with a few other people and थोड़ा थोड़ा करके उनको भी kind of coding का used to हो गए projects एक साथ करके, तो it got the burden of basically teaching and learning kind of spreads out evenly. That can be a way to uh, scaling out.
थैंक यू फॉर those suggestions as well. ये टाइम हम थोड़ा ट्राई कर रहे हैं हैकेथॉन कल्चर लाना. सो लास्ट ईयर लाइक थोड़े बहुत जो टीम्स थे इनहेरिटेंस के बाद वो टीम अप किए थे एंड दे हैड आल्सो वन सम हैकेथॉन्स. ये टाइम वी आर ट्राइंग द सेम कि व्हाटएवर हैकेथॉन्स नियर बाय इन मुंबई ऑफलाइन आ रहा है या फिर हाइब्रिड ऑनलाइन भी हो, वी उनका थोड़ा पीआर कर देते हैं जूनियर्स में. देन जो भी मेंटीज है वो एक साथ टीम अप करके जा रहे हैं एंड उनको थोड़ा मेंटरिंग भी दे रहा है पर टीम, रिव्यूइंग देयर प्रपोजल्स, प्रोजेक्ट के दिन पे उनको थोड़ा हेल्प करना. दैट्स गुड, दैट्स गुड. एक और चीज़ आई से कि जो कॉलेज में होता है प्रोजेक्ट्स वगैरह, एज यू नो, मतलब टीचर को एक तो वो ठीक से देखते नहीं है या फिर दे डोंट केयर मच. कॉलेज प्रोजेक्ट्स आधे वक्त तो इनकम्प्लीट भी रहते हैं. सो लाइक प्रॉपर प्रोजेक्ट्स वगैरह तुम्हें अभी हैकाथॉन में भी अवेलेबल से कि ऑफ कोर्स कंप्लीट होते हैं 24 घंटे में. इट्स नॉट इजी टू हैव अ फुल प्रोडक्ट, बट इट एटलीस्ट चैलेंजेस यू कि अगर तुम्हें बनाना है 4 फीचर्स ये प्रोजेक्ट बनाना है, उसके लिए यू आर बीइंग चैलेंज कि उधर बैठ के हाँ अभी 24 घंटे हमने पार्ट लिया तो बना के ही रहेगी. या फिर 15 दिन का लॉन्ग लॉन्ग टर्म हैकाथॉन है वैसा. तो इट्स गुड कि मतलब तुम्हें थोड़ा तुम्हारे जो लिमिट्स है कोडिंग केस में, मे बी यू तुम नहीं कर सकते अकेले इंडिपेंडेंट लैब बना नहीं सकते, वेबसाइट नहीं बना सकते. ये माइट पुश यू टुवर्ड्स की लर्निंग की थोड़ा और एक्स्ट्रा, जिससे तुम नेक्स्ट टाइम थोड़ा और तुम्हें आइडिया आ जाए. एंड जितना बेसिकली कोड करोगे उतना बेटर ही है वो. एक पॉइंट के बाद सच बोल रहा हूँ, यू गेट सुपर पावर्स. तुम लॉग्स देख के फाट फाट से देख सकते हो कि ये फटा वो फटा कोड में. तुम्हें ऐसा डर लगना कम हो जाता है एक पॉइंट के बाद. सो वो जब आता है उतना कॉन्फिडेंस, दैट इज सम लाइक तुम आई कांट इवन एक्सप्लेन. वो अलग ही रहता है. बट उसके लिए हाँ, उसके लिए थोड़ा आई से थोड़ा पार्टिसिपेशन, थोड़ा पुश योरसेल्फ टुवर्ड्स more projects and try to complete them. आधे मन मत छोड़ो. Don't have incomplete reports. और वो कर लो तो मतलब दे दो ध्यान. मतलब अगर पुराने प्रोजेक्ट्स भी कभी दिख रहे हैं तुम्हें तो यू नो चलो अभी एक हफ्ता फ्री बैठा है तो वो प्रोजेक्ट को रिवाइव कर दो. मे बी पूरा नया लैंग्वेज से लिख दो. या फिर क्योंकि तुम 2 साल पहले 1 साल पहले जो प्रोजेक्ट बनाया, ऑफ कोर्स तुम 1 साल में इतना सीख चुके रहोगे कि तुम उसको इम्प्रूव कर सकते हो लास्ट साल में तुमने जो किया उसके ऊपर. तो जैसे बट या इट्स गुड कि सीओसी का गुड टू सी बढ़ रहा है. वेरी वेरी थैंक्स फॉर दैट एंड आई एम श्योर ये सजेशंस जूनियर्स के लिए भी हेल्पफुल रहेंगे. एंड ऑल्सो दीप्स पॉइंट की हैकाथॉन्स आर वेरी रिवॉर्डिश इन दैट सेंस. Alright, I think we can continue with Team Elite Entities presentations. Yes, we are presenting now. I think Rishabh, you have joined from two accounts. That's why I just heard an echo. Can you just check that? Okay. You can start, guys. Good morning, everyone. I am Rohit Karvatkar. I am from production department, and my teammate Rishabh is from civil department. Our concept is of making a blood bank. First of all, I would like to thank community of coders for giving us an opportunity to work on such a beautiful app. Um, our mentors who guided us through the entire journey, Tushar and Aishwarya, and also thank them for mentoring us. We were 4 members in our team, but two of them didn't respond and quit in between. So we are just two, and we'll present further. Talking about making this app, the motive behind making a blood bank app was that blood cannot be created by artificially. So um,
it can only be regenerated or manufactured. It cannot be regenerated. Uh, it can only be given to patients through donation, like blood transfusion is happening. So blood donation is very important for uh, saving the lives. So we created a blood bank app in which there are two features in which the user can donate the blood, and other feature is that a request can be given by patient for uh, granting accessing the blood. So the features of the app will be shared by my friend Rishabh. Rishabh, I guess your mic is off. I guess you're not audible. Sorry for that. फीचर्स ऑफ द ऐप क्या करेगा, पहले हमारे ऐप में एक होम पेज पे जाएंगे, वहाँ पे हम एक रिक्वेस्ट सेक्शन बनाए। रिक्वेस्ट सेक्शन में पहला कोई भी यूजर्स रहेगा, उसको ब्लड या प्लेटलेट्स चाहिए रहेगा, वो सिलेक्ट करेगा। वो सिलेक्ट करने के बाद वो ब्लड ग्रुप सिलेक्ट करेगा। अगर ब्लड चाहिए तो उसको ब्लड ग्रुप कौन सा चाहिए। ब्लड ग्रुप सिलेक्ट करने के बाद हमारे डेटाबेस से हम ये सिलेक्ट करेंगे कि ए पॉजिटिव उसने सिलेक्ट किया बंदे ने, तो ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को किस ब्लड बैंक में अवेलेबल है। अगर जिस ब्लड बैंक में अवेलेबल है हम उसको लिस्ट शो करेंगे। उसमें से हम उसका लोकेशन भी लेंगे। लोकेशन से हम ये अपने जो एक मिनिमम डायमीटर रहेगा उस रेडियस में हम उसको, रेडियस के अंदर जितने भी ब्लड से वो ब्लड बैंक है उसको हम शो करेंगे। फिर उसको क्लिक करने के बाद उन्हें एक फॉर्म भरना पड़ेगा जिसमें डॉक्टर का रिक्वेस्ट, डॉक्टर ने जो बोला है कि ब्लड इसको ज़रूरत है वो सारे डिटेल्स भरने पड़ेंगे पेशेंट के, और वो फिर भेज देगा किसी पर्टिकुलर ब्लड बैंक को। ब्लड बैंक के पास जाएगा तो ब्लड बैंक को दिखेगा उनके पास एक रिक्वेस्ट आया है कि इसको इसको ब्लड बैंक चाहिए। वो यहाँ से एक्सेप्ट करके फिर उन्हें ब्लड जो प्रॉपर वे ऑफ ट्रांसफरिंग द ब्लड वो उन्हें डोनेट दे देंगे। जो इतना फीस अमाउंट रहेगा वो पे करना रहेगा, जो पे करना रहेगा वो कर देंगे। फिर अगर किसी यूजर्स को ब्लड ब्लड डोनेट करना है एज अ मतलब डोनर डोनर के हिसाब से, तो वो हमारे ऐप पे जाके नियर बाय ब्लड कैंप्स किधर चल रहे उधर जाकर डोनेट कर सकता है। किसी ब्लड बैंक में जाकर डोनेट कर सकता है। किसी अगर उसने अपने नियर बाय नीड पे सिलेक्ट किया तो नियर बाय नीड में किसको इसको जरूरत है वो पता चलेगा। नियर बाय नीड ऑफ सेम ब्लड ग्रुप, जो यूजर है उसके पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप के नियर बाय किसको नीड है वो देख सकता है। अगर किसी ब्लड बैंक में अगर उसे डोनेट करना है तो वो रिक्वेस्ट भेजेगा। फिर रिक्वेस्ट भेजने के बाद जो अपना ऐप ऑर्गेनाइजेशन का नेम रहेगा वो उसको फिल करना रहेगा। फिर उसके बाद जिसके लिए हमने टेक्नोलॉजी यूज़ किया है डार्ट, फ्लटर, फायरबेस टेक्नोलॉजी यूज़ किया है। फायरबेस हमने अपना बैकएंड के लिए यूज़ किया है। हमारा फ्यूचर स्कोप क्या है कि मतलब एक तो हॉस्पिटल को सर्च करने के लिए हम एक सर्च बार डालना चाहते हैं। गूगल मैप्स डालना चाहते हैं जिससे मतलब यूजर्स अपने लोकेशन पे पहुंच सके बराबर टाइम पे, यूजर्स को जाना है तो। फिर कलर स्कीम डालना चाहते हैं कि किसी ब्लड बैंक में कोई अगर यूजर है उसको डोनेट करना है, ब्लड डोनेट करने जा रहा है, तो जब उसको ब्लड बैंक का लिस्ट दिखेगा कि नियर बाय कितने उसके ब्लड बैंक है, उसमें उसको कलर ऑप्शन रहेगा कि मतलब जैसे अगर रेड कलर से शो कर रहा अगर वो ब्लड बैंक, तो मतलब उस ब्लड बैंक के पास अभी ब्लड की कमी है। किसी के पास ग्रीन कलर का शो कर रहा है तो मतलब उसके पास अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ ब्लड है कि मतलब वो दे सकते हैं। तो वो ऑप्शन डाल के हम ये फीचर पर्सपेक्टिव में डाले हैं। फिर एम्बुलेंस बुकिंग का ऑनलाइन पेमेंट फीचर्स भी डालना है, ये फीचर स्कोप है ऐप के लिए। टीम मेंबर्स में ऋषभ सिंह, रोहित करवतकर और मेंटर्स हमारे तुषार से बातें हैं, ऐश्वर्या यादव। अब लाइव डेमो देता हूँ।
Uh, I am sharing the screen. Yes, it's visible. Is it visible? Yes. This is our first page of our app where the यहाँ पे आएगा कोई यूजर्स आएगा तो वो रजिस्टर या लॉगिन का ऑप्शन रहेगा। रजिस्टर पे जब वो क्लिक करेगा तो उससे पूछेगा आप यूजर्स हो या ऑर्गेनाइजेशन हो। अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन जैसे ब्लड बैंक ये सब है तो ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करके वो फर्दर जाएंगे। तो यूजर्स है तो यूजर्स पे क्लिक करेंगे, उन्हें एक फॉर्म मिलेगा भरने के लिए, जैसे कि CoC एज 23, डेट ऑफ बर्थ 04, ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव, स्टेट महाराष्ट्र, now after we click the login, the अभी हम अपने ऐप के होम पेज पे आ गए और हमारा जो डेटा है वो बैकएंड में सेव हो चुका है। तो यहाँ पे आने के बाद हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे मिलते हैं। होम का मिलता, यहाँ पे डोनेट करने का सेक्शन मिलता, यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजने का सेक्शन मिलता, फिर यहाँ पे हमारा प्रोफाइल है जो भी बनानी है, फिर ड्रॉवर्स के अंदर बहुत सारे ऑप्शन है। फाइंड ब्लड, ब्लड बैंक, हमारे मतलब जो भी डेटाबेस में सेव्ड है ब्लड, उनके वो ब्लड्स यहाँ पे शो कर रहे हैं। फिर हमें रिक्वेस्ट भेजना है हमारे पास में, तो वो कैसे भेजेंगे? यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ब्लड या प्लेटलेट्स, किसी एक को, जैसे कि हमें ब्लड भेजना है तो ब्लड को सिलेक्ट किए, फिर यहाँ पे ब्लड ग्रुप सिलेक्ट करेंगे, हमें कौन सा ब्लड ग्रुप, जैसे बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप चाहिए। फिर ये यहाँ पे लोकेशन आ गया है जो साई विसावा लिखा है, वहाँ पे लोकेशन ट्रेस करके लोकेशन दे दिया है। फिर हम पेशेंट का नाम सिलेक्ट करते हैं और कॉन्टैक्ट पर्सन हम सिलेक्ट करते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर उनका जो भी मतलब जिनसे कोऑर्डिनेट कर सके उनका नंबर प्रोवाइड करना, एज मतलब पेशेंट का जो एज है वो कितना है, पेशेंट का डेट ऑफ बर्थ, कितना मिनट्स ऑफ ब्लड चाहिए उन्हें, 3 मिनट्स, पेशेंट कंडीशन क्या है, एडिशनल नोट, फिर रिक्वायर्ड डेट। आफ्टर द क्लिकिंग द सेंड रिक्वेस्ट ऑप्शन, रिक्वेस्ट सक्सेसफुली मतलब जो भी क्या बोलते हैं ब्लड बैंक जिसके पास अवेलेबल रहेगा उनके पास गया होगा भी रिक्वेस्ट। फिर हम रिक्वेस्ट अभी भेज दिए। फिर हमारे पास यहाँ पे नियर बाय कैंप, ब्लड बैंक्स, नियर बाय नीड, नियर बाय ब्लड ग्रुप, यहाँ पे हम देख सकते हैं। फिर यहाँ ये अभी ड्रॉवर पूरा बना नहीं है, तो ड्रॉवर में मतलब हिस्ट्री में जाके अपना यूजर्स अपना हिस्ट्री चेक कर सकता है, जैसे उसने ब्लड को डोनेट किया, ब्लड रिसीव किया है किसी यूजर से, वो रिक्वेस्ट सेम अबाउट अस में हमारे ऐप का मतलब उसके बारे में देख सकता है, रेट कर सकता है ऐप को। फिर नोटिफिकेशन सेक्शन एक यहाँ पे बना है आइकन, तो नोटिफिकेशन सेक्शन में कोई भी यूजर्स अगर
यूजर्स को नोटिफिकेशन आता है, जैसे कि किसी को ब्लड बैंक चाहिए, अगर किसी ब्लड में अवेलेबल नहीं है, ब्लड बैंक में ब्लड अवेलेबल नहीं है, तो वो ब्लड बैंक, तो वो नोटिफाई कर सकते हैं, जितने भी यूजर्स रहेंगे उसको नोटिफिकेशन जाएगा कि मतलब दिस पर्सन को इतना यूनिट्स ऑफ ब्लड चाहिए। तो वो भी सेम ब्लड, जैसे ए बी पॉजिटिव, तो ए बी पॉजिटिव वाले ही जितने भी यूजर रहेंगे सबको नोटिफिकेशन जाएगा। फिर अगर जैसे 3 यूनिट्स ऑफ ब्लड है, तो अगर 3 पर्सन ने अगर एक्सेप्ट कर लिया कि 3 पर्सन ने ये एक्सेप्ट किया मेरे को इतना इतना यूनिट्स ऑफ ब्लड, फर्स्ट पर्सन ने 1 यूनिट देने के लिए, सेकंड पर्सन ने 1 यूनिट देने के लिए, थर्ड पर्सन 1 यूनिट, 3 यूनिट्स उसके ऊपर हो गए, तो फिर सबको नोटिफिकेशन चल जाएगा कि मतलब इसका इसको ब्लड का मतलब मिल चुका है इन्हें ब्लड। तो ये मतलब यूजर्स का यूआई है। अभी इसके अंदर मतलब एज अ ऑर्गेनाइजेशन का यूआई कैसा दिखेगा वो देखते हैं। और हम मतलब ऑथेंटिकेट करके डायरेक्ट लॉगिन भी कर सकते हैं। अगर पासवर्ड भूल गए तो फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन है अवेलेबल। रजिस्टर में जाते हैं, एज ऑर्गेनाइजेशन को अगर लॉगिन करना है तो ऐसे CoC ब्लड बैंक अगर रखते हैं ऑर्गेनाइजेशन का नाम, रजिस्टर्ड आईडी जो भी गवर्नमेंट के अप्रूव्ड रहेगा वो, टेलीफोन नंबर ब्लड बैंक का, ईमेल आईडी ऑफ ब्लड बैंक, यूजर नेम ऑफ ब्लड बैंक में जो यूज करेगा, जिसके पास एक्सेस रहेगा, जो वहाँ पे अपडेट ये सब करेगा। तो यहाँ पे आने के बाद उनको दो ऑप्शन मिलेगा, अपडेट और पेशेंट रिक्वेस्ट। जहाँ पे पेशेंट का रिक्वेस्ट आएगा वहाँ पे पेशेंट का रिक्वेस्ट दिखेगा, और अपडेट में वो अपने स्लॉट्स को अपडेट करेंगे कि मतलब अभी ए पॉजिटिव का 10 यूनिट्स अवेलेबल है, बी पॉजिटिव का 15 यूनिट्स अवेलेबल है, वो अपडेट्स करेंगे। होम सेक्शन में, यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स सेक्शन में उन्हें अपॉइंटमेंट्स दिखेगा, जो भी मतलब किसी यूजर्स को डोनेट करना है तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट सेक्शन में अपॉइंटमेंट दिखेगा, इसका इसका अपॉइंटमेंट्स है, और उन्हें कंफर्म कर सकते हैं कि मतलब इस टाइमिंग स्लॉट पे इस बंदे को हमें देना है, मतलब ब्लड डोनेट करने आना है। प्रोफाइल में उनका प्रोफाइल विजिट करेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम All right, guys. Congratulations, first of all, on completing the project. It is really well made, and the UI also looks good. I just had one question on my side. आपने बोला कि forgot password है, तो like उसमें like क्या ऑप्शन, कैसे ऑथेंटिकेट करना होता है उसमें, पासवर्ड नहीं रहेगा तो? मैं मैं आपको बताता हूँ कैसे। एज अ लॉगिन पे गए, फॉरगेट पासवर्ड में एज अ जो अपना रजिस्टर्ड ईमेल है, जैसे कि मेरा rishabh.singh9861@gmail.com, यहाँ पे हम रिसेट बटन पे क्लिक किया, पासवर्ड लिंक सेट सक्सेसफुली, प्लीज चेक आउट द ईमेल। ओके, तो आप ये यहाँ लिंक पे हम किससे जाते हैं सेंड कर रहे तो हैं? हमारे ईमेल पे रिसेट और पासवर्ड का हमें ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे हम क्लिक करके न्यू पासवर्ड हम डाल सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और हमने पासवर्ड डाला तो वो पासवर्ड हमें शो करने लगा। यहाँ पे हम जाके यू हैव साइन इन, यू कैन नाउ साइन इन विथ योर न्यू पासवर्ड, पासवर्ड सेव सक्सेसफुली। तो अभी हम लोग अभी ईमेल अभी लॉगिन करेंगे।
All right, that's nice. Deep has raised the hand. Yes, please. Deep. Hey, hi Rishabh. Yes, So I like the idea about like blood bank donation and like having a like one-stop solution for that. Uh, there were like few points which I wanted to mention. I think the colors used for app could be like better one. Like I know we are signifying something which is related to blood bank, but uh, like the the UX could be better. Okay. Second point, like when you are entering the patient's details and the contact person details. Okay. So I think like there was a like what you could have done was like have two separate pages, one just for patient details and one just for contact details. Like right okay, now you were explaining me, so I was able to know like whose age I have to put, whose number I have to put, right? But like these 2 points and like UX could be a better point. yes, sir. Yes, sir. Overall, it's We'll a great one. try to do better UX. Do we have और any more मेरे को suggestions? ये था कि क्या ऐसा कोई ऐप पहले से सिमिलर ऐप पहले से एग्जिस्टिंग है क्या एक ऐप है, हम लोग एक कहीं बट वो जितना हमने फंक्शन फंक्शन दिया है ना उतना नहीं है उसमें, बट पूरी तरह से ओके नहीं क्योंकि तुम्हारा ऐसे देखा जाए तो ऐप का आइडिया काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और काफ़ी यूजफुल है क्योंकि इसे हमने आराम से गूगल तुम प्ले लोग स्टोर पे मतलब चेक किया था तो उसमें फ्यूचर इतनी अवेलेबिलिटी हाँ नहीं थी ऐप के, दो या तीन ब्लड थे, एक यू ब्लड करके था, हाँ तो उसमें हाँ ये ऑप्शंस थे, बट जितना हमने ऑप्शंस के बारे में सोचा है ना उतना उनके हम्म, अंदर था ही नहीं। वो एम्बुलेंस को बुक कर सकते थे, एम्बुलेंस का ऑप्शन दिया, हम्म, ब्लड बैंक्स का उन्होंने सिर्फ लिस्ट दे दिया, ब्लड बैंक हम्म, में ब्लड अवेलेबल है कि नहीं है वो नहीं बता पा रहे, ऐसा ऐसा इशू था हम्म। उसमें। नहीं क्योंकि तुम्हारा आइडिया काफ़ी अच्छा है और तुम लोग इसको आराम से मतलब स्केल कर सकते हो तो यस इसका Yes, मतलब sir. ये प्रोजेक्ट को थोड़ा आगे और लेके जाने का सोचना यस Yes, sir. वन मतलब थिंग जो मैंने बहुत रिसेंटली एक हैकाथॉन में देखा था, इस ब्लड बैंक में उन्होंने ब्लॉकचेन इंटीग्रेट किया था and वो जीत गए थे वो हैकाथॉन। सो सम यूज केस ऑफ ब्लॉकचेन जो तुम इंटीग्रेट कर पाओ इसमें फ्यूचर स्कोप में, दैट कुड बी हेल्पफुल। यस Sir, we'll try. best thing would be to visit a blood bank and see how they are doing it right now. ओके सर। ये ऐसे भी Yes, कर sir. सकते हो मतलब तुमको कंप्लीट आइडिया मिलेगा और तुम्हें फिर ऐप में वो सब इंटीग्रेट करने को भी काफ़ी मतलब अगर तुमको ऐसा है कुछ बनाने का इच्छा है इसको आगे लेके जाने का तो तुम कर सकते हो We'll definitely do it, sir. एंड आई थिंक वी शुड ऑल्सो अप्रिशिएट कि ये टीम में बस दो लोगों ने काम किया है एंड ये लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से है, सो डेडिकेशन इन लोग का बहुत अच्छा रहा होगा। और कोई सजेशंस? क्या बात है आई थिंक नो, stay with COC, keep contributing, and great work to the mentors as well, Aishwarya and Tushar. बहुत हेल्प किया या प्रोडक्शन से होके काफ़ी अच्छा ऐप बनाया तुम लोग ने सिविल सर्विस। Civil and fraud, nice. Yes, sir. सर मत बुलाओ भाई। ठीक है, That is the first so thing, like सबको like you can call by their names or कुछ नहीं है तो भैया बुलाओ. Like even I did the same thing when I went to hackathon. Everybody was calling me sir, even the COC member. So I don't think that is needed here. Like community है, we can call by name and we can call by like if you don't know the name, you can definitely call भैया. ओके, ठीक है, thank you so much, and the next team is team short circuit. Thank you so या much. Hello everyone, this is our team Short Circuits.
I would like to introduce our team leader Yash Rajput and team member Shubham Namute and myself Sijal Viray. This is our app Suraksha. We realize that accidents are common in India as well as in other major countries, and many times it happens that the victim doesn't get help at that time because the location can be identified which led to the death of that person. कभी कभी एक्सीडेंट्स माइनर होते हैं बट वो लोकेशन आइडेंटिफाई नहीं होती और उनको हेल्प नहीं मिलती उस टाइम में इसलिए वो पर्सन की डेथ हो जाती है सो वी मेड दिस ऐप सुरक्षा Our apps will help to identify the location of the victim when he or she meets with an accident and will inform their guardian about the location जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है एंड सो दैट वो किसी से कांटेक्ट करके उनकी उनकी हेल्प हो सके उस टाइम पे लाइक इट वुड नॉट लेड टू एंड बट लेड टू देयर डेथ हम लोगों ने यहाँ पे फ्लटर और फायरबेस यूज़ किया है फायरबेस हमने लॉगिन साइन अप पेजेस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया रजिस्टर्ड लॉगिन एंड साइन अप पेज के लिए और वो फॉरगेट पासवर्ड के लिए भी वही यूज़ किया है लाइक हमारे इसमें लिंक आती है रिसेट करने के लिए लिंक आती है ईमेल आईडी पे अभी हमारे कुछ हमने ये पैकेजेस यूज़ किए थे जहाँ पे हमने कुछ जियो लोकेटर्स यूज़ किए एक्सीलरोमीटर यूज़ किए नॉइस मीटर यूज़ किए फिर हमारे इसमें एक फंक्शन आता है जहाँ पे एसएमएस यूज़ होते हैं तो हमारे पास मेजर हमारे ये सारे पैकेजेस थे and then the key features in our app is one is the noise detector and second is the accelerometer बीच में आपको जो सुरक्षा मोड दिख रहा है इट इज अ स्विच जहाँ पे अगर हम वो टर्न ऑन करेंगे तो हमें नॉइज एंड एक्सेलरोमीटर का डेटा आना मिल जाएगा तो अभी बेसिकली हमारे इसमें होता क्या अभी हमारे ऐप में फर्स्ट थिंग इज जहाँ पे स्विच सुरक्षा मोड ऑन करना पड़ता है जहाँ से वेन यू स्टार्ट दी ऐप हम लॉग इन रजिस्टर करते हैं वेन यू रजिस्टर एक गार्डियन के डिटेल्स देते हैं हम कि उनका नाम क्या है उनका नंबर क्या है एंड फिर उनका रिलेशन क्या है आपसे वहाँ से आप सीधा होम पेज पे डायरेक्ट करते हैं यू जस्ट हैव अ सिंगल स्विच मोड ऑन करने के बाद एक नॉइज एंड एक्सेलरोमीटर की लिमिट है अगर एग्जांपल नॉइज एयरबैग्स जब हमारे कार में डिप्लॉय होते हैं उनका डेसिबल 140 होता है तो हमने यहाँ पे 135 लिमिट लेके रखा है कि अगर 135 के ऊपर वो नॉइज डिटेक्ट करता है तो उसको लगता है कि एक एयरबैग एक्सप्लोड हुआ है इन कार्स या फिर कुछ मेजर हुआ है तो वो एक अलर्ट देगा जहाँ पे आप सेकंड पिक्चर में देख सकते हो आर यू ओके एक मैसेज करके सुरक्षा के ऐप में से नोटिफिकेशन आता है अगर आप वो आपको 30 सेकंड्स के अंदर या कोई एक टाइम के अंदर वो स्लाइड नहीं करते हो तो आपके जो गार्डियन होंगे उनको एक राइट साइड पे आप जो देख रहे हो ऐसे एक मैसेज जाएगा जहाँ पे आपकी लोकेशन जाएगी एंड बताया जाएगा कि आपका एक एक्सीडेंट हुआ है प्लीज जस्ट चेक ऑन अभी इफ यू वांट टू स्केल इट अगर हम इसमें हम दो फीचर्स लगा सकते हैं एक मंथली फी चार्ज होगी जैसे नॉर्मली एप्स में प्रो वर्जन के लिए होता है या फिर एक स्टार्टिंग में ही अलग फीचर्स के लिए हम एक पेड वर्जन करेंगे शुभम आई वुड लाइक टू कंटिन्यू Yes, sure. My screen, hello, my screen is visible. Yes. Hello.
Shubham, are you facing any difficulties? Hello. Are you facing any difficulties? Hi, yeah. Uh, my mobile screen is visible to you. Yes, yes, it's visible. You can continue. Okay. So yeah, uh, as Yash said, just a minute. हाँ सो जैसे कि यश ने बताया काय होतं सर कीपैड नहीं खुल रहा क्या? Any other member who would like to present? यश हेलो हाँ. Can you please present? I think I have some. Okay, just give me 1 minute. I'll just need to set up. Uh, ये सेटअप लेट्स से कि मुझे आइडिया काफी अच्छा लगा तुम्हारे ऐप का मतलब ये जो फंक्शनलिटी है मतलब यूनिक भी है काफी इसमें जस्ट लॉगिन लॉग इंफॉर्मेशन है थोड़ा एंट्रीज अलग है तो वो दिख के रिफ्रेशिंग लगता है सेकेंडली इवन फॉर मी काइंड ऑफ ऐसे these things I can relate to लॉन्ग ड्राइव वगैरह जा रहे हैं लोकेशन कभी कुछ हो जाता है तो आई कैन वेरी मच सी द यूज केस इनफैक्ट एप्पल ने इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये किया इम्प्लीमेंट किया था इसका राइट क्रैश डिटेक्शन का तो वो एक मेरे को चैलेंज रहेगा कि जो उनको भी आया है अपेरेंटली रोलर कोस्टर राइड पे लोगों को 911 कॉल चले गए बिकॉज वो राइड की जो जी फोर्सेस वगैरह थी उससे वो फॉल्स पॉजिटिव काइंड ऑफ हो गया सिनेरियो तुम्हारा सर्विस फिलहाल मैट्रिक्स सिंपल ना परंतु मे बी ऐसे कि और एक्सपांड करो उसको कितना और कौन कौन सा डेटा लाता फिर वो भी ये कि उस डेटा को कैसे हैंडल कर सके और मतलब फॉल्स पॉजिटिव कितने से कम कर सके उसको ट्रैक करना बट ओवरऑल मतलब मुझे आइडिया तो बहुत अच्छा लगा कि तुम ऐसा मैसेज वगैरह सेट करके तो सिचुएशन में these things if this automation if they work as intended काफी काफी तुम्हारे ऊपर से रेट बढ़ जाता है so if it works well तो
you're really a good app, I guess. अभी करंटली जो भी हमारे ऐप के अंदर डेटा है वो सब थियोरेटिकल डेटा है, तो कोई प्रैक्टिकल टेस्ट एज सच पॉसिबल नहीं नहीं है। नहीं नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड, तुम फोन वगैरह सीखने नहीं जा रहे, टोटली गेट इट। वो तुम्हें काइंड ऑफ उसको रिसर्च वगैरह भी देखना पड़ेगा, मतलब बहुत किया रहेगा लोगों ने, इतना तो पॉसिबल हमने है। क्या किया था कि हमने एक एवरेज क्रैश का डेटा निकाला था, उसका सबका एवरेज लिया था 36 पेपर्स का। उसमें एवरेज 62.8 आया था, तो हमने उसको 60 कंसिडर कर लिया। ओके, ये 60 का है, ये साउंड का है कि? नहीं नहीं, ये हमने साउंड के लिए तो सिर्फ एक डेसिबल जो कार हाँ, में करेक्ट एक्सप्लोड होता है करेक्ट। उसके वजह से रखा है। अच्छा एंड फिर हमने जो एक्सेलरोमीटर का रखा है, तो एक एक्सेलरेशन का जो अच्छा, क्रैश होता ओके है उसका ओके, वो बाइक्स 60। एंड सबके लिए 62.5 होता है, कि उस पे इट गेट्स वर्स, लाइक उस सिचुएशन में वो क्रैश होने के चांसेस होते हैं। ओके, आई मीन तुम्हारे पास फेल सेफ भी है वैसे कि आई गेस तुम सीधा मैसेज नहीं भेजते कर रहे, तुम थोड़ा एक नोटि कुछ यूजर हाँ, को हम सबसे पहले प्रॉब्लम। हम एक यूजर को एक नोटिफिकेशन देते हैं कि आर यू ओके करके, एक वो काउंटडाउन के अंदर वो नलीफाई नहीं करता है तो फिर वो गार्डियन को मैसेज आता है। ओके, वो काफी अच्छा है। Hello, Ish. Hello. You're audible, Shubham. Yes. Yes. Can you या hear me? प्रेजेंटिंग। हाँ, मैं प्रेजेंट करता हूँ। तू एक्सप्लेन कर दे कि शायद मैं हाँ बोल के चलेगा। वैसे कर रहा हूँ तो मेरा वॉइस लैग हो रहा है। या कूल वर्क्स। हाँ ठीक है, जस्ट अ मिनट। सो बेसिकली ये हमारा लॉगिन पेज है। यहाँ पे अभी यूजर के जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूजर्स है वो यहाँ पे अपना ईमेल एंड पासवर्ड लिख सकता है। शुभम एक बार चेक लो। सो अभी बेसिकली हमारा स्विच मोड ऑफ है, तो वो वहाँ पे 0.0 डेसिबल एंड एक्सीलरोमीटर भी 0 दिखा रहा है। तो जब हम वो स्विच ऑन करता है, यहाँ पे अभी माइनस इन्फिनिटी डेसिबल दिखा रहा है क्योंकि उसने मीट लिंक ज्वाइन की है एंड वो जो मीट का माइक है वो म्यूट पे है, तो वो पूरा जो वो डेटा है वो दिखा रहा है माइनस इन्फिनिटी डेसिबल। अगर वो वहाँ से वो डिस्कनेक्ट करेगा तो वो जो अपने फ़ोन में बाकी का नॉइज़ आ रहा है वो वहाँ पे दिखने लग जाएगा। फ़ोन ज़रा एक बार शेक करके दिखा दें शुभम। जैसे ही वो शेक कर रहा है आप देख सकते हो कि वहाँ पे वो आपको एक मैसेज आता है, आर यू ओके प्लीज नलिफाई दिस मैसेज। अभी बस एक डेमो के लिए हमने जो वैल्यूज है वो 60 नहीं रखा, हमने बहुत कम रखा है सो दैट आपको वो नोटिफिकेशन दिख सके। एंड अभी यहाँ पे उसने नलिफाई नहीं किया है तो उस एक मैसेज आया, आप देख सकते हो वो मैसेज, दिस मैसेज आज में फ्रॉम सुरक्षा आप करके। एंड मैंने जो नंबर है, मतलब मेरा नंबर और जो गार्डियन का नंबर वो सेम डाला था, इसलिए पहले मैसेज सेंड हुआ और बाद में ये आया। उसी को वो रिसीव हो। हाँ, मुझे रिसीव हुआ। ये आई हमने होप डेमो के लिए कंस्ट्रक्ट करके रखा था। आई होप कि मेरी वॉइस लैग नहीं हो रही। नहीं नहीं, शुभ सॉल्व किया। हाँ ठीक है। और उसके बाद अगर उस लिंक पे क्लिक करते हैं हम, तो मैप्स खुलता है, गूगल मैप्स, जो कि यूज़र की करंट लोकेशन बताता है, लाइव लोकेशन। जस्ट घूम लेता हूँ। ये गूगल मैप्स का लोकेशन तुमने वो गूगल के यूआरएल में कोऑर्डिनेट्स ऐड करके बनाया क्या? हाँ बराबर, गूगल के हाँ कोऑर्डिनेट्स में लाइव लाइव कोऑर्डिनेट्स ऐड करके। राइट। हाँ, एक मिनट, रीसेट पासवर्ड का भी दिखा देता हूँ मैं। अभी ऑफ कर दिया और यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस करके एक बनाया है, मतलब जो डेवलपर है उनके ये फ़ोन नंबर यहाँ का है। से आप
अभी कॉल हमने हमारे नंबर्स डाल दिए इसमें तो और कॉल मैसेज WhatsApp। हमारे ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम और गिटहब का लिंक। और उसके बाद यहाँ पे पॉलिसी पेज है। पॉलिसी पेज में क्योंकि हम लोग डेटा ले रहे हैं ना यूज़र का, गार्डियन नेम वगैरह, तो सब डेटा का क्या कर रहे हैं, मतलब सिक्योर कितना है कुछ नहीं, वो सब दिखाया है पूरा पॉलिसी पेज में। और उसके बाद अबाउट लॉगिन पेज, यहाँ पे आने के बाद मैंने, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैंने ईमेल आईडी और पासवर्ड पहले डाल के रखा था। अगर नहीं होगा, अगर यूज़र फर्स्ट टाइम लॉगिन करता है तो यहाँ पे रजिस्टर है, यहाँ पे ईमेल आईडी, नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड 1 2 3 4 6, देन लॉगिन। देन यहाँ पे गार्डियन के डिटेल्स डालने पड़ेंगे, जो जिसको कि मैसेज सेंड होने वाला है। तो मैं कुछ डमी नाम ले लेता हूँ, कुछ नंबर मेरा ही डाल देता हूँ। ब्रदर, देन यहाँ से फिर से लॉगिन करना पड़ेगा, मतलब वो क्रेडेंशियल डाल के। अगर फॉरवर्ड पासवर्ड का भी हमने एक रखा है, अगर यूज़र पासवर्ड भूल जाता है, मतलब एक अंदर, तो देन वी हैव टू एंटर द ईमेल आईडी, देन सेंड ओटीपी री-वेरीफाई करने के लिए। ये रिसीव, ये देखो यहाँ पे ओटीपी आ गया, 67 36, एंड देन वेरीफाई ओटीपी। देन यहाँ पे हमें फिर से ईमेल आईडी डालना पड़ेगा, जिसपे हमारा रीसेट पासवर्ड का लिंक शेयर होगा। शुभम, आई थिंक दैट्स इनफ, हमें समझ गया ये। ओके, थैंक यू। और कोई फीचर्स बाकी है क्या अपार्ट फ्रॉम दिस? नो, सॉरी, लाइक और कोई कोर फीचर समझाना बाकी है तुम्हारा? नहीं, अभी तो कोई बाकी नहीं है, इम्प्लीमेंट हो गया है, लेकिन फ्यूचर्स में वहाँ पे एक डॉक्टर का भी करना है, मतलब जो नियर बाय हॉस्पिटल्स है उनको भी लोकेट करके डालना है, ऐसा वो इम्प्लीमेंट करना बाकी है, फ्यूचर स्कोप में रखा है उसको। एंड कुड यू आल्सो अगेन रिपीट योर टेक स्टैक, क्या यूज किया था? हम फ्लटर आपको वो एंड, पूरा प्रेजेंटेशन वापस मैं दिखा देता ठीक है। हूँ। शुभम स्क्रीन शेयर करना बंद कर दो। सो अभी हमारे ऐप में मेजरली कुछ ज़्यादा बैकएंड का काम नहीं था, सिर्फ लॉगिन डेटा एंड गार्डियन पेजेस के लिए थे, तो हमारा मेजर काम फ्लटर से हो गया था। एंड फिर बाकी जो लॉगिन पेजेस वगैरह उसके डेटा के लिए वो हमने फायरबेस यूज़ किया था वापस। अच्छा, ओके। एंड हाउ कन्वीनियंट वाज एक्सेसिंग ये accelerometer, then geolocation, etc. from Flutter? और इट वाज काफ़ी इजी क्योंकि हमारे पास सारे पैकेजेस थे, उसमें हमने यूज़ कर पाए थे। फ्लटर और एक्सीलेरोमीटर का जो पैकेज है, सेंसर के पैकेज है, उसमें सब आता है। जो फर्स्ट वाला पैकेज है यहाँ पे। अच्छा, एक एक क्वेश्चन, ये जो पैकेजेस है ये iOS एंड एंड्रॉइड बोथ कंपैटिबल है क्या? iOS आणि एंड्रॉइड दोनों के लिए कंपेटेबल है, लेकिन जो सेंड मैसेज वाला फीचर है, मतलब हम लोग डायरेक्ट विदाउट यूजर के परमिशन के सेंड मैसेज, परमिशन ले रहे हैं लेकिन डायरेक्ट मैसेज सेंड कर रहे हैं ना, तो हाँ, हाँ, वो iOS अलाउड नहीं करता। हाँ, राइट राइट राइट, बराबर, वो अलाउड हाँ, नहीं करता। सिक्योरिटी परमिशन, करेक्ट। यहाँ तक कि प्ले स्टोर भी अलाउड नहीं करता इसको।
प्ले स्टोर के लिए भी उनको पहले एप्लीकेशन डालना पड़ता, फिर वो अलाउड करता। नहीं बट तुम्हारा आइडिया मतलब सिंपल है बट काफी अच्छा है मुझे लगा। हाँ और तुमने कंप्लीट ये बनाया है, सब चल रहा है फंक्शनल भी वैसे, yes. तो मुझे काफी अच्छा लगा। वैसे वैसे कि जस्ट एक दो सजेशन ये कि यूजर, अच्छा एक चीज, तुम्हारा ऐप जो है वो रनिंग रखना पड़ता है फॉर इट टू कीप ट्रैक ऑफ डेटा, कि वो बैकग्राउंड में या फिर ऑफ स्टेट में भी वो ट्रैक नहीं रखता है? नहीं नहीं, ऑफ स्टेट में भी रखता है ट्रैक, वो बैकग्राउंड रखता है, ओह बैकग्राउंड दैट में। इज गुड। तो हाँ तुम लोग मे बी ऐसे सोच सकते हो कि जो तुम ऑन ऑफ कर रहे हो रही हाँ उसके लिए मे बी एक विजेट जैसा कुछ बनवा सकते हो फ्यूचर में, कि ताकि वो अगर ऑफ करना है ऑन करना है उसके लिए ऐप में जाना ना पड़े, सीधा एक हम विजेट। हाँ नोटिफिकेशन में, हाँ ठीक है। हाँ नोटिफिकेशन नहीं, वो नहीं, तुम एक तुम्हारा ये जो रेडियो बटन है ना, हाँ उससे सुरक्षा मोड का, हाँ उसका भी तुम सीधा विजेट बना सकते हो ऑफ या ऑन करके, हाँ और या सिर्फ वो विजेट पे क्लिक कर तो ऑन या ऑफ हो जाएगा, हाँ समझ ऐप ढूंढते बैठना नहीं पड़ता। वैसे तुम कर सकते हो, कुछ सोच सकते हो। हाँ और आई मीन काइंड ऑफ वो ऐसे यूजर एक्सेसिबिलिटी साइड ऑफ व्यू से तुम काइंड ऑफ और मे बी और कुछ ऐसा विजेट या फिर जो भी नोटिफिकेशन वाला चीज है वो सोच सकते हो, बट अदरवाइज मुझे लाइक अगेन ऐप अच्छा है, एग्जीक्यूशन भी अच्छा है, हाँ सो गुड हाँ गुड वर्क। आई थिंक रवि भाई was with it. नहीं, प्ले स्टोर पे नहीं अपलोड किया है ये, लेकिन मैंने अच्छा देखा नहीं, था, मतलब पढ़ा था डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा सा, तो मालूम है आपको ओके, कर ज्यादा। देना लाइक कभी, बिकॉज हाँ हाँ ठीक है, यूजफुल है काफी। ओके चलिए, थैंक थैंक यू। यू, थैंक Great यू work with the सीओसी। project. And also, I would like to thoroughly thank the mentors, Saili and Tushar. Efforts दिख रहे हैं कि काफी ज्यादा डाले होंगे तुम लोग ना. हाँ उन्होंने बहुत हेल्प किया है सर। काफी एफर्ट्स डाले हम लोगों ने। काफी कभी भी मीट के लिए रेडी रहते थे। एंड That's थैंक्स great. एंड सॉरी फॉर इंटरप्शन। चलेगा चलेगा. And now the final team for AppDev, team out of bounds. Yes. Can you hear me? Yes, you're audible. Yes. Screen visible है ना? Yes. So hello everyone. We are out of bounds, team out of bounds, and we have created an application Playon, which is basically a Tinder for sports. So the current scenario is that everyone on a daily basis rely on their friends, limited number of friends, जिसके साथ वो रोज खेलते हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई अवेलेबल नहीं होता है, एंड देन दे हैव टू गेट, दे आर बोर्ड और घर पे बैठते हैं, एंड दे हैव नो ऑप्शन। या तो फिर कोई बार ऐसे भी होता है कि टर्फ पे या कहीं कोई टूर्नामेंट हो तो लास्ट मोमेंट पे लोग बैकआउट कर देते हैं, एक प्लेयर कम पड़ता है, तो किसी भी अनएक्सपीरियंस प्लेयर या कच्चा प्लेयर भी से उसको बुलाना पड़ता है, और वो भी बहुत सारे कॉल्स करने के बाद। तो उसका हम लोग ने सोल्यूशन लाया, वी हैव डिजिटलाइज्ड द एंटायर प्रोसेस बाय मेकिंग अ यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन, एंड इट इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर एवरी प्लेयर ऑल ओवर. The tools we have used for making the applications are Firebase, Flutter, Dart, Firebase Firestore for backend, and Flutter Dart for frontend. Some of the features of our app are Google user authentication, wherein the user can sign in or register with their Google account, forgot password, edit. They can edit their profile anytime. They can create an activity, that is whenever they want a player, और इफ दे आर गोइंग टू प्ले, मतलब सपोज आज खेलने जा रहे हैं, उन लोग के पास 3 प्लेयर है या 4 प्लेयर है, दे वांट सम मोर प्लेयर्स, तो ऐप पे डाल सकते हैं कि इतने प्लेयर्स की रिक्वायरमेंट है, ये एरिया में है, ये स्पोर्ट है. फिर अगर कोई इंडिविजुअल प्लेयर है जिसको एक्टिविटी ढूंढना है तो वो फाइंड प्लेयर करके कर सकता है, एंड देयर इज ग्रुप चैट एंड प्लेयर चैट. द फीचर्स ऑफ आवर ऐप आर द लॉगिन रजिस्टर. हम लोग ने यूआई पे उतना
ध्यान नहीं दिया है, मतलब because of the functionalities. So after opening our app, the user can either log in or register. This is the login page wherein the user is already registered. There is a forgot password feature. This is the registration page. Here, even here, it is email ID and password. They can set their password and register, or they can sign in with their Google account. After registering or logging in our app, they have to enter the details like name, mobile number, area, gender or role. In role, we have created a drop down for either a player or a turf owner. टर्फ ओनर का भी हम लोग ने उतना किया नहीं है, प्लेयर ही मोस्टली सब फीचर्स प्लेयर के लिए ही है. After entering these details, they enter whichever sports they are interested in, which they can edit anytime. अभी टीम स्पोर्ट्स ही डाला है, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स डाल सकते हैं हम लोग, पर अभी डाला हुआ नहीं है. फिर आफ्टर दैट ये हमारा होम पेज है जहाँ पे क्रिएटेड एक्टिविटीज़ वो लोग जो उन्होंने खुद बनाई हुई एक्टिविटीज़ है वो देख सकते हैं. दीज आर द जॉइंट एक्टिविटीज़, मतलब जितने भी एक्टिविटीज़ ज्वाइन किए वो इधर डिस्प्ले होगी. एंड दीज आर द ग्रुप्स. फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर ग्रुप है जिसके साथ रोज़ खेलते हैं, तो वो ग्रुप इधर ग्रुप कोड होगा और फिर उसका चैट कर सकते हैं रोज़. फिर दिस इज द फाइंड प्लेयर सेक्शन wherein there is a drop down. अभी के लिए हम लोग ने 4 एरिया डाला है, बट वो हम लोग पिन कोड से भी आगे करने वाले थे कि अभी 4 एरिया डाला है जिससे वो सॉर्ट होके एरिया और स्पोर्ट्स से सॉर्ट होके जितने भी एक्टिविटीज वो कैटेगरी में आती है वो दिखेगी. wherein you can see the name and profile pic of the person who has created the activity, area, number of people who are going, मतलब जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, तो यू कैन नो कि कितने लोग इंटरेस्टेड है क्या है. फिर अगर कॉस्ट है, अगर कुछ टूर्नामेंट है और अगर वो एक्टिविटी का कॉस्ट है तो वो दिखेगा, और कितने लोग की रिक्वायरमेंट है वो इधर दिखेगा, एंड डेट. फिर ये क्रिएट एक्टिविटी है जहाँ पे यू कैन create your own activity. You can choose the sport, area, date, date, time, and if it is a invite only से you can send a link और दिख सकता है. फिर there is a settings option और price का option है. फिर फाइंड टर्फ का हम लोग ने सिर्फ एक पेज बनाया, पर वही प्लेयर के जैसे ही वो लोकेशन और स्पोर्ट्स के लिए जितने भी टर्फ अवेलेबल होंगे वो आ जाएगा इधर. उसका बैक एंड डेटा भी हम लोग का हुआ नहीं अब तक. फिर निखिल, यू कैन कंटिन्यू. ये यूजर प्रोफाइल तो मतलब ये प्रोफाइल पेज है एक, बाद में उसको अगर एडिट करना रहेगा तो एडिट प्रोफाइल में जाके चेंजेस कर सकते हैं जो भी, मतलब जैसे प्रोफाइल फोटो ऐड करना होगा तो जो भी चेंजेस करने होंगे स्पोर्ट्स में, तो अगर स्पोर्ट्स पे क्लिक करेंगे तो वापस वही सिलेक्ट करना होगा स्पोर्ट्स उसमें. और सेटिंग्स में जाके ये थोड़े फीचर्स नहीं हुए अब तक, और साइन आउट पे करेंगे तो वापस वो वेलकम स्क्रीन खुलेगा लॉगिन और साइन अप का, और फॉरगेट पासवर्ड के लिए भी ऑप्शन है. नेक्स्ट है. और ये अभी ये तो ये जो है वो डिटेल्स है, तो से अगर जो भी एक्टिविटी पर अगर हमको एक्टिविटी कोई सिलेक्ट कर, हमको इंटरेस्टेड है हम लोग उसमें, हम लोग उस पर क्लिक कर सकते हैं. तो ये दिखेगा हम लोग इसकी डिटेल्स क्या, जैसे नंबर ऑफ प्लेयर्स और वो सब. और अगर कोई क्वेरी रहेगी कि जैसे मतलब कोई डाउट रहेगा, मुझे पूछना रहेगा, तो मैं वो चैट पर आ सकता हूँ कि मतलब ये क्वेरी मेरे को, तो जिसने क्रिएट किया एक्टिविटी वो आंसर कर सकता है. और इसमें बाद में ज्वाइन करके तो दिखेगा कि ज्वाइन, अगर इस पे फिलहाल पेमेंट का नहीं किया मैंने, और अगर पे INR पे क्लिक करेंगे तो वो हमारे जॉइन एक्टिविटीज में आ जाएगा. और ये टर्म डिटेल्स का पेज है, वो बाकी है करना हम लोग का. और ये जो स्पेसिफिक एक्टिविटी क्रिएट किया था हम लोग ने उसका भी चैट करना है, चालू कर सकते हैं ग्रुप चैट उसका. जैसे ये बास्केटबॉल का एक्टिविटी मैंने ज्वाइन किया था, इसमें हम लोग चैट कर सकते हैं दूसरे लोगों से. नेक्स्ट स्लाइड. ये हमने जो फीचर और जो हम लोग इसमें करने वाले हैं, टर्फ ओनर का रजिस्ट्रेशन, मतलब जैसे टर्फ बुकिंग होता है, हर एक टर्फ के जो ओनर रहेंगे उनको मतलब क्रेडेंशियल्स मिलेंगे, वो बुकिंग का लोग कॉन्टेक्ट कर सकता है. अगर मेरे को बुक करना रहेगा तो मैं उनको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकता हूँ ऐप के थ्रू. और ऐसे रिव्यू करना रहेगा प्लेयर्स या टर्फ को, वो भी करना बाकी है, तो फ्यूचर इम्प्लीमेंटेशन है. और जैसे पुश नोटिफिकेशन में, जैसे अगर मैंने कोई एक्टिविटी क्रिएट किया था और किसने अगर मेरा एक्टिविटी ज्वाइन किया है तो मेरे को नोटिफिकेशन आया कि
this person has joined our activity. Now Akshay, demo of the demo दिखा दो. तो यहाँ पे ये जयेश काकड़े नाम का प्लेयर का है। वहाँ पे सेम यहाँ पे वो क्रिएट कर सकता है। मैंने एक एक्टिविटी पहले ही क्रिएट करके रखी थी, तो इसके माई एक्टिविटी में वो एक्टिविटी आ जाएंगी जो भी उसने क्रिएट की। तो इसमें जाके वो उस गेम में चैट भी कर सकता है। तो जैसे मैंने मैसेज डाला तो ये उसमें सेव हो जाएगा। तो जो भी ज्वाइन करेगा इस एक्टिविटी को वो यहाँ पे मैसेज कर सकता है। जैसे इसमें वो दिखेगा भी किसने ज्वाइन, तो ये फर्स्ट है जो एडमिन है वही है, तो एक ही बंदा ज्वाइन का। और इसने जो भी ज्वाइंट एक्टिविटी की है, जैसे इसके ज्वाइंट एक्टिविटी में भी दिखेंगे। तो इसने एक एक्टिविटी ज्वाइन किया था पहले, तो इसमें भी उसने मैसेज भेजा था वैसे। और ग्रुप्स है, जैसे मैंने एक ग्रुप बनाया था बैकएंड में, हाय सर ना, वो अभी ये ग्रुप बनाया था अक्षय ने, तो उसको ज्वाइन कर सकता है वो, और उसमें मैसेज भी कर सकता है। मतलब किसी ग्रुप ने ज्वाइन किया तो ये उसने मैसेज भेजा तो उसमें मैं मैसेज भी भेज सकता हूँ। ये ग्रुप्स का है। और यहाँ पे वो ये कर सकता है, जैसे यहाँ पे उसको अभी हॉकी का देखना है, तो हॉकी में किसने एक्टिविटी क्रिएट किया है, उसने एक्टिविटी क्रिएट किया, तो उसको जाके वो ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेरीज है, वो क्वेरीज सेंड कर सकता है। जैसे तो उसने वो क्वेरीज सेंड की, तो वो जिसको क्वेरी सेंड, जिसने एक्टिविटी क्रिएट किया उसको रिप्लाई का मैसेज भी आएगा। जैसे यहाँ पे इसने जो इसके माई एक्टिविटी में किसी ने तो क्वेरी सेंड किया है, तो व्हाट इज कॉस्ट, तो पहले मैंने किया था, तो यहाँ पे वो रिप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे वो रिप्लाई करेगा, तो यहाँ पे वो आ जाएगा आंसर उसका बाद में। और यहाँ पे वो क्रिएट करेगा, जैसे उसको क्या क्रिएट जो वो अब स्पोर्ट्स सिलेक्ट करेगा, कौन सा स्पोर्ट्स खेलना है, वैसे एरिया, बाद में डेट, एरिया सिलेक्ट करेगा, फिर डेट सिलेक्ट करेगा। ऐसे वो एक्टिविटी क्रिएट करेगा, और वो जो भी एक्टिविटी क्रिएट होगा वो इस पे दिखेगा जिसने भी क्रिएट किया एक्टिविटी। और बाद में है टर्फ का पेज। टर्फ का पेज अभी तक सिर्फ फ्रंट एंड हुआ है, बैक एंड में किया नहीं, वो भी हो जाएगा जल्द। और प्रोफाइल का पेज है, जहाँ पे प्रोफाइल पिक सिलेक्ट करने का भी ऑप्शन है, अभी इसमें नहीं। और वो भी स्टोर हो जाता है डेटाबेस में। बाद में ये उसका यहाँ से वो स्पोर्ट दूसरा सिलेक्ट करना है तो दूसरे पे सिलेक्ट करता है। जैसे बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट सिलेक्ट किया और मैंने डन कर दिया, बाद में सेव कर लिया, तो ये सेव हो गए उसके बास्केटबॉल, टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट। तो यहाँ पे उसके हॉकी का चला जाएगा, क्योंकि उसने हॉकी अभी डिस्कले, तो ये जो स्पोर्ट उसने सिलेक्ट किया उसी स्पोर्ट्स का वो प्लेयर फाइंड कर सकता है, मतलब जो भी एक्टिविटी वो फाइंड कर सकता है बाद में। और यहाँ पे ये और सेटिंग में सिर्फ चेंज पासवर्ड और साइन आउट ही अभी तक ऑन है, बाकी सब उसमें कुछ किया नहीं है अभी तक, बस यही है। So that's it from our side. Guys, we have a question from Ravi. प्ले स्टोर पे आपने अपलोड किया हुआ है क्या? नहीं 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 नहीं, Okay. अभी तक बहुत, मतलब टर्फ का पेज बनाना बाकी है, तो नहीं किया अभी तक अपलोड, वो बनाने के बाद करें। Alright. Any other questions from our dear mentors? आई मीन मुझे ये वाला आइडिया भी काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी यूनिक था आइडिया, एंड अगेन रिलेटेबल भी है। क्योंकि बहुत लोग पता है जो टॉप वगैरह जाना चाहते हैं, लोग मिलते नहीं है, मतलब अभी तुम वर्क वगैरह जाओगे बैंगलोर या फिर कहीं भी, तुम्हारा फ्रेंड सर्कल नहीं रहेगा, फिर इतना बड़ा नहीं रहेगा, फिर तुम्हें जाके खेलना है आपको। उसको ये काफ़ी सेंसिबल है, एटलीस्ट मुझे जितना पता है, मैंने ऐसा ऐप देखा नहीं है, बट इसका पोटेंशियल तो है। उस हिसाब से भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग, तुम इसको आगे एक्चुअली लेजिट लेके जा सकते हो। तो ये इस पे कंटिन्यू रखो। यूआई ऑफ कोर्स, हाँ, तुम
बट दैट्स फाइन, दैट्स स्टिल फाइन। तुम्हारा बिजनेस केस अगर स्ट्रांग है तो जो है कभी भी तुम पूरा क्लीन अप कर सकते हो। एंड फंक्शनलिटी वाइज वगैरह तुम्हारा चल रहा है, दैट इज गुड। तुम्हें मतलब तुम्हारा फीचर सेट वगैरह सब चल रहा है तो अच्छा हाँ ही है। एंड तुम ये सब भी सोच सकते हो कि मतलब लोग यूजुअली जो ऐसे स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं तो हेल्थ कॉन्शियस वगैरह रहते हैं, तो वो जो उनके कैलोरी ट्रैकर एप्स वगैरह रहते हैं तो उनके साथ इंटीग्रेशन, मतलब अभी हेल्थ ऐप हाँ रहता है इसमें, एंड्रॉइड और iOS में, तो आई गेस तुम्हारा ऐप में भी उससे डेटा फीड हो सकता है, तो उसका डेटा तुम ला सकते हो, मे बी उस पोटेंशियल में तुम टैप कर सकते हो। एंड आई मीन काफ़ी कुछ है, सही बोले तो तुम्हारे पास बहुत विश यू हाँ, और बेस्ट। ये इसमें स्टोर होता है डेटाबेस में, ये डेटाबेस बना है। जैसे किसी भी एक्टिविटी को क्रिएट किया तो एरिया वाइज, स्पोर्ट्स वाइज, वो सब ये होता है। फायर बेस्ड डेटाबेस यूज किया। बैकएंड का काफी इंटेंसिव यूज है, लाइक डिड यू फाइंड फायरबेस कन्वीनियंट और इरिटेटिंग, समथिंग लाइक दैट? हाँ, कभी कभी मतलब कभी कभी क्रिएट एक्टिविटी किया तो वो 2 बार दिख जाता है, रिफ्रेश करने के बाद 1 बार आता है, ऐसा होता है। थोड़ा दूसरे भी डेटाबेसेस एक्सप्लोर कर सकते हो तुम लोग। हाँ अभी बहुत क्यूरियस हूँ, फायरबेस बहुत लोगों को तुम्हें परेशान किया है, बहुत स्ट्रेंज है उनका। तुम लोग का एंड्रॉइड का जेडीके यूज करते, इसका सॉरी जेडीके एंड्रॉइड का कोई लाइब्रेरी वगैरह यूज करते हो, जावा लाइब्रेरी, एच डी के है क्या इसका कोई फायरबेस का? हाँ, एच डी का नहीं है। कि तुम वो डायरेक्ट फायरबेस फायरबेस ये फायरबेस लाइब्रेरी? CLI डाउनलोड किया था, उससे किया था फायरबेस CLI। अच्छा, काफी आई मीन देखना पड़ेगा भाई, मतलब इतना सबको ये हो रहा है कि तो उन्होंने आई मीन आई कैन, ये भी है कि हाँ तुम जैसे बोलते थे दूसरे सीनियर्स भी कि पुराना हो गया, तो वैसा रहेगा तो अगर रिसोर्सेस सही से नहीं मिलते तो इतना इतना टेंशन मत लो, क्योंकि एक हाँ एक और चीज़ फायरबेस का इन जनरल लेवल से भी तुम ना ऐसा जो फ्रेमवर्क्स वगैरह तो उससे एकदम टाइड अप मत लेना, कॉन्सेप्ट जो रहते हैं ना HTTP वगैरह, वो वो अगर तुम्हारा बहुत क्लियर रहेगा ना तो तुम एक बार लाइब्रेरी वगैरह ना चल रहा तुम काइंड ऑफ डिबग कर सकते हो कि नहीं चल रहा क्या नहीं हो रहा। आई मीन ये इन जनरल कमेंट है, मतलब ऐसा इस प्रोजेक्ट के लिए नहीं, तुम्हारा आई मीन चीज़ें चल भी रही है तो आई डोंट थिंक इतना बड़ा इशू, बट हाँ गिवन की फायरबेस को भी इतना ये तेरा अगेन कि फ्रेमवर्क से लड़ने का पॉइंट आ गया, मतलब आई डोंट फील इट्स अ गुड गुड चॉइस, बट ठीक है। तो अदरवाइज आप प्रोजेक्ट तो आई मीन अगेन अच्छा ही है, तुम फीचर सेट और बढ़ा ही सकते हो, और थोड़ा और अट्रैक्टिव वगैरह यूज, अगर तुम एक्चुअल ऐप स्टोर वगैरह जा रहे हो ना तो वो मतलब अभी देखो तुम टिंडर से कंपेयर कर रहे हो राइट, तो टिंडर पे वो रिटेंशन क्यों रहता है वो कि मतलब वो साइट लेफ्ट और राइट करते वगैरह, आई डोंट थिंक इस केस में वैसा होगा, ये मोर ऑफ बुक माई शो जैसा काइंड ऑफ ऐप लग रहा है, बट स्टिल मतलब जो भी है तुम मतलब हम लोग ने ऐसा टिंडर से इसलिए कंपेयर किया क्योंकि वी मैच प्लेयर्स इंस्टेड ऑफ फॉर रेटिंग के रिप्लेसमेंट में वैसा। करेक्ट इन अ वे हाँ, लाइक तुम बट इट्स काइंड ऑफ लाइक तुम छोटे छोटे इवेंट्स बन रहे हैं कि 4 लोग 5 लोग 100 लोग ठीक है, कहाँ पे ग्रुप बन रहा है उसमें लोग एंटर हो रहे हैं, हाँ, एटलीस्ट मुझे वैसा आएगा, तो मतलब काइंड ऑफ किसी को बुक माई शो का टूर्नामेंट का स्टाइल, रखना होगा। हाँ टूर्नामेंट रखना हाँ रहेगा हाँ तो वगैरह लोकल वगैरह का भी टूर्नामेंट, तो वो हाँ यूजुअली लोगों को ऐसा ओपन नहीं रहता, लोगों को लगता है कि तुम घुस नहीं सकते इसमें, मतलब अरे ये लोग को जानता नहीं है मैं कैसे आ गया, वो सब हाँ वो हाँ स्टिग्मा रहता है, तो ये काफ़ी अच्छा स्टेप है, और आई मीन वो जो टर्फ वाले लोग खुशी हो रहे हैं कि उनको धंधा मिल रहा है, एक्स्ट्रा धंधा मिल रहा है, तो
बिजनेस वाइज काफी काफी स्ट्रांग है आई फील। बस वही कि यूआई वगैरह आराम अच्छे से सोच लेना कैसे कैसा ऐप होना चाहिए, क्या कहाँ तुम्हारे कोर फंक्शनलिटीज वगैरह है, एंड अकॉर्डिंगली फिर उतना ऑप्टिमाइज कर लेना। बेसिकली यूजर के लिए यूजर सेंट्रिक बहुत बनना। अगेन ये सब मैं बोल रहा हूँ क्योंकि तुम ऐप स्टोर जाने की ये सोच करो, और आई फील बिजनेस कॉन्सेप्ट वाइज से काफी क्लोज है, तुम ऐप स्टोर जा सकते हो इसके साथ, तुम एक्चुअली एक यूजर बेस बना सकते हो। मे बी तुम्हें शुरुआत में तुम टर्फ वगैरह से कॉन्टैक्ट नहीं रख सकते, बट एटलीस्ट तुम यूजर को दे सकते हो कि चलो किसी को गली गली क्रिकेट खेल रहा 5 लोग चाहिए, उसने डाल दिया पोस्ट, अभी आगे 5 लोग, तो वैसा तुम उस पॉइंट से स्टार्ट करके फिर तुम आगे आगे बढ़ा सकते हो। गुड 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 गुड। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थोड़ा बैकएंड पे एक्चुअली सिंस तुम लोग इतने डेटा के साथ लाइक कस्टम काम कर रहे हो, तो यू कैन इन द फ्यूचर एक्सप्लोर समथिंग कॉल्ड एज ग्राफ क्यूएल, बिकॉज वो तुम्हें कस्टम क्वेरीज लिख के जितना डेटा चाहिए उतना ही लेके देगा, एंड इतने सारे पेजेस बना रहे हो तो इट इज वेरी कन्वीनियंट अपडेट करना, रीड करना. Also, another thing, if the team doesn't mind, तुम लोग वापस presentation दोगे क्या? We have Himanshu in the meet here. Himanshu is one of the co-founders of CoC. Welcome, Himanshu. A privilege to have Hey you. guys, it's okay. I think you guys must be on a time sensitive नहीं to नहीं make the यार, presentation we done. can. Okay, yeah, I'll be glad to see. Thank you. Actually, this was the last team in the app dev domain, and Oh, after okay. this lunch break है, and उसके बाद we'll continue with the blockchain presentations in 1 hour. So ये एक आप presentation ले लो, then आप blockchain के time पे भी आ जाओगे, तो it would be great. हाँ, done. So Kiyor, if you could again continue. स्क्रीन विजिबल है? Mm-hmm. So hello. My team, out of bounds, we have created an application, Tinder for Sports, which is basically Tinder for Sports called Play On. So the current scenario is कि whenever we want to play, कभी बिल्डिंग में या कहीं पर टर्फ पे या कभी भी खेलना हो, तो we rely on our limited number of friends on an everyday basis, कि कभी 4-5 दोस्त हैं उनके साथ रोज खेलते हैं, पर कभी ऐसा होता है कि वो दोस्त नहीं होते, या फिर वी आर हम लोग कहीं और पे गए होते हैं जहाँ पे वी डोंट नो एनीवन, और समटाइम्स ऐसा होता है कि टर्फ पे हम लोग जा रहे हैं, कोई टूर्नामेंट है, कोई मैच है, तो कोई एक बंदा लास्ट मोमेंट पे बैकआउट कर देता है, एंड वी हैव टू मेक एन नंबर ऑफ कॉल्स टू अरेंज फॉर रिप्लेसमेंट, जो रिलायबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. So we have digitalized the entire process. Our solution was to digitalize the entire process and make a user-friendly application wherein you can find players. The tools we used were Firebase, Flutter, and Dart. Firebase for backend and Flutter and Dart for front end. Some of the features of our app were Google user authentication. A user can sign in with their Google account, forgot password, edit profile, wherein they can edit their profile at any time they want to. Create an activity wherein the user can create an activity जहाँ पे he will mention the date, time, sport, area, कि उसको ये एरिया में ये टाइम पे इतने प्लेयर्स है, ये स्पोर्ट खेलेंगे, तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो ज्वाइन कर सकता है. और सिमिलरली कोई एक प्लेयर एक्टिविटीज़ ढूंढ सकता है कि को मेरे एरिया में ये टाइम पे कोई एक्टिविटी है क्या जहाँ पे लोग खेल रहे, वेरी आई कैन ज्वाइन देम. ग्रुप चैट जहाँ पे इफ देर इज अ पर्टिकुलर ग्रुप जिसके साथ तुम रोज खेलते हो, सो यू कैन चैट विद देम ऑन आवर ऐप. देर इज प्लेयर चैट, पर्टिकुलर प्लेयर के साथ या तो पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए भी चैट हम लोग ने इम्प्लीमेंट किया हुआ है. दीज आर द यूआई यूजर इंटरफेसेस. ये लॉग इन और रजिस्टर का ऑप्शन है, फिर यू कैन लॉग इन यूजिंग देयर ईमेल एंड पासवर्ड, फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन दिया हुआ है. फिर दिस इज द रजिस्ट्रेशन पेज जहाँ पे यू कैन रजिस्टर यूजिंग योर ईमेल आईडी और पासवर्ड सेट करना है, और यू कैन इवन साइन इन लॉग इन विद योर गूगल अकाउंट.
After logging in or registering, you have to enter your details like name, phone number, area, जेंडर एंड रोल में प्लेयर और टर्फ ओनर का ऑप्शंस है, पर अभी के लिए हम लोग ने प्लेयर के ज़्यादा फंक्शनलिटीज और फीचर्स है. आफ्टर दैट यू हैव टू सिलेक्ट द स्पोर्ट्स जिसको जो तुम लोग को खेलना है वो. फिर निखिल कंफर्म. तो ये होम पेज है. इसमें माई एक्टिविटी है, जॉइंट एक्टिविटीज और ग्रुप्स है. माई एक्टिविटी में जो मैंने एक्टिविटी क्रिएट की है वो दिखेंगे. जॉइंट एक्टिविटीज में जो मैंने ज्वाइन किए वो दिखेंगे. और ग्रुप्स में मतलब जो भी ग्रुप ऑलरेडी क्रिएटेड है या मेरे को खुद को ग्रुप्स बनाने हैं चैट करने के लिए, तो वो उसमें मतलब उसमें है. और फाइन प्लेयर में मेरे को कोई एक्टिविटी ज्वाइन करनी है जो किसी ने ऑलरेडी बनाई हुई है, तो लोकेशन और स्पोर्ट्स के चीज पे सॉर्ट होके जो भी एक्टिविटीज उसमें आती है वो सारी डिस्प्ले होगी, और मेरे को जो ज्वाइन करना है वो मैं देख सकता हूँ. इसमें जो प्लेयर जिसने क्रिएट किया है वो कितने प्लेयर्स चाहिए, डेट, लोकेशन और कितने लोग टू गोइंग्स मतलब 2 लोगों ने ऑलरेडी ज्वाइन किया है वो, और कितना प्राइस होगा वो भी इसमें है. क्रिएट क्रिएट एक्टिविटी में मेरे को अगर कोई एक्टिविटी क्रिएट करना हो जैसे तो उसमें स्पोर्ट्स एरिया, पिक, डेट, टाइम वो सब में डाल के एक्टिविटी क्रिएट कर सकता हूँ. तो वो फिर फाइन प्लेयर में दिखेगा. ऐसा अगर मैंने बोरियली में हॉकी किया तो बोरियली हॉकी में वो डिस्प्ले होगा. और टर्फ के लिए अभी हम लोगों ने खाली यूआई बनाया है, उसका बैकएंड का पार्ट हमारा बाकी है. उसमें भी सेम लोकेशन और स्पोर्ट्स के बेसिस पे वो सॉर्ट हो जाएगा. और ये प्रोफाइल है. प्रोफाइल में वो जो भी डिटेल्स जो एंटर किए थे वो सब दिखेंगे, और लास्ट में स्पोर्ट्स भी दिखेगा. फिर बाद में एडिट प्रोफाइल करके है, तो उसमें यूजर जो प्रोफाइल एडिट कर सकता है उसमें फोटो डालना रहेगा, उसको प्रोफाइल फोटो डाल सकता है. स्पोर्ट्स में तो आप उसको चेंज करना रहेगा, जो पहले जो स्पोर्ट्स के थे उसके और भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट आ रहेगा तो वो कर सकता है. फिर हमने सेटिंग्स में खाली चेंज पासवर्ड और साइन आउट का ही फंक्शनलिटी हुआ है. साइन आउट करेगा तो वापस वो वेलकम स्क्रीन के ऊपर चला जाएगा. और फॉरवर्ड पासवर्ड के लिए ईमेल भेज के तो ईमेल पे लिंक आएगा, वहां से पासवर्ड चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट सेट में ये जो भी अगर फाइन प्लेयर में जाके मैंने कोई एक्टिविटी सिलेक्ट किया तो उसमें मेरे को इसके डिटेल्स दिखेंगे. तो इसमें टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स जो जा रहे हैं, तो कौन कौन जा रहे हैं वो मतलब सी ऑल प्लेयर्स में वो सब दिखेंगे. कॉस्ट पर प्लेयर. फिर अगर मुझे कोई क्वेरी रहेगी कि जैसे मतलब कि उसका प्राइस क्या है या जो भी कुछ भी रहेगा तो मैं उस पर डाल सकता हूँ. और जिसने क्रिएट किया एक्टिविटी वो उसमें हम लोग को रिप्लाई करेगा कि मतलब वो आंसर करेगा उसका. और ज्वाइन जिस पे करेंगे तो ये जाके ज्वाइन जिस करेंगे तो ये हमारा जाके मतलब उसको क्या ज्वाइन एक्टिविटीज में दिख जाएगा कि कौन सा एक्टिविटी ज्वाइन किया है. फिर अगर फिलहाल पेमेंट का हमने किया नहीं, अगर इस डायरेक्ट इससे ऐप से पेमेंट करके रखेंगे तो उसमें अगर पे करके तो अभी के लिए तो खाली ज्वाइन करेंगे, खाली इतना ही रखा है अभी के लिए. और टर्फ डिटेल्स मतलब वो टर्फ में मैंने क्लिक किया, जैसे वो टर्फ का एक आइकन टर्फ फाइन टर्फ में देख सके तो उस पर अगर क्लिक करेंगे तो टर्फ के डिटेल्स आ जाएंगे. और ये अगर कोई एक्टिविटी मैंने ज्वाइन किया है उसके लिए चैट उसके लिए ग्रुप चैट रखा जिससे ज्वाइन किया लोग उसके बात कर सकते हो उससे. नेक्स्ट स्लाइड. ये जो फ्यूचर इम्प्लीमेंटेशन जो करने वाले हैं तो उसमें एक ये स्लाइड की प्रीवियस स्लाइड. हाँ, तो एक टर्फ ओनर रजिस्ट्रेशन है, मतलब जैसे टर्फ बुकिंग करना रहेगा तो जो टर्फ ओनर रहेगा उसको क्रेडेंशियल्स मिलेंगे, तो उसके थ्रू हम लोग टर्फ बुक कर सकते हैं उसमें ऐप्स के थ्रू. बाद में एक रिव्यू और रेट प्लेस मतलब टर्फ को रेट करना होगा. अगर हम लोग ऑलरेडी खेल रहे हैं किसके साथ अगर कोई प्लेस अगर हमने खेला है तो उसको रिव्यू करके उसके रेट कर सकते हैं, ताकि बाकी लोग को मालूम पड़े कि वो कितने उसने कितने एक्टिविटीज पहले खेले और कैसा खेलता है वो. और पुश नोटिफिकेशंस में अगर मैंने कोई एक्टिविटी क्रिएट किया है और जिसने मेरा एक्टिविटी ज्वाइन किया है तो मुझे नोटिफिकेशन आ जाएगा
भी impressed सच्ची में. एंड आप अगर लाइक हैकेथॉन में भी ये टाइम आ जाते जजिंग के लिए, इट वुड हैव बीन ग्रेट. I was not in India, मतलब अभी भी नहीं हूँ. हाँ. इसलिए मैं आ नहीं पाया. मैं आई थिंक 19th को ही वापस से रिटर्न हुआ था, तो ओके. इसलिए मैं लेट भी प्री ज्वाइन किया. एसएच प्री एसएच में आ जाओगे? किसमें? प्री स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन के जजिंग के लिए. अगर वर्चुअल रहेगा तो मैं ज्वाइन कर लूँगा, बट अगर ना, वर्चुअल नहीं एक्चुअली रहेगा तो ऑफलाइन रहेगा, फिजिकल रहेगा. नहीं. तो तब नहीं ज्वाइन कर पाऊंगा मैं. एंड थोड़े से आपके भी सजेशंस चाहिए थे कि एज एंड व्हेन ये कम्युनिटी एक्सपांड हो रही है, थोड़े बहुत हमारे भी रिसोर्सेस लिमिटेड रहते हैं, कॉम्प्रोमाइजेस बनाने पड़ते हैं. सो हाउ डू वी कीप अप Correct. दैट कम्युनिटी स्पिरिट? I इट think शुडंट लुक लाइक इट. so I was also part of like SRA when I was in college. So what they used to do when they had like a lot of number of entries for like such projects and this, they did exactly what you guys did. Open channel where like people can help each other and there are like no dedicated mentors. So that gives more freedom to and like motivation. Like if there is a common channel where a lot of people are doing project works together, there is like a general motivation, and if people keep on sharing their progress, तो बाकी लोग को भी थोड़ा किक आता है कि हमें भी करना चाहिए. So that was one thing which worked well. तो मतलब there is like two category of people, जो करना चाहता है और जो नहीं करना चाहता है, who just wants to be like part of something. So वो अपने आप filter out हो जाता है when like there is no dedicated mentor type. And अगर मतलब जो करने वाले रहेंगे they like keep on pushing, और जो नहीं करने वाले रहेंगे वो अपने आप filter out हो जाता है. You start seeing that. I think तुम लोग ने जो implement किया उसमें भी kind of वैसा ही हुआ रहेगा, जो demote promote हुए थे with dedicated mentors. हाँ, लाइक 4-5 टीम्स ही थे एक्चुअली. Okay. हाँ. बट या कटथ्रोट कंपटीशन होता है उसमें भी. हाँ, people are like, I think हम लोग का batch में इतना ज़्यादा competitiveness नहीं था, but from what I've seen is like the current batches are very competitive and like very up to date with Very what's up to going date on. with what's going on. Yeah, that's great. That is very good. That is very good. Any more points you would want to add from your end? वरना अभी 220 से we are starting with the blockchain presentations, which is It's just almost half 2 an hour yeah. from now. Blockchain, like I don't have a lot of expertise. I'll just be a silent spectator in that. But to be honest, like the scale at you guys are operating at, we never thought it would grow into such a big community. So like to be honest, I don't have much to say as to how you guys should operate. It's really good to see it has grown a It lot. means a lot. One suggestion is कि थोड़ा Discord active रखो, so that like जो pass out से उनको भी पता चलते रहे क्या हो रहा है. हाँ, वो एक चीज है जो हमारे एंड पे लैकिंग है. एक्टिविटी रिपोर्ट्स वगैरह हम नहीं भेज रहे हैं अभी के लिए. So मैं तुम लोगों that को is मतलब something SRA worth का noting. Discord server बता सकता हूँ. It is like very much active and like they collaborate with projects, collaborate on projects with senior as well. I'll just share my screen 1 minute. So yeah, like information general है. फिर जो भी competitions है, there are like separate channels where people can come and collaborate. Eklavya is their kind of inheritance. फिर like seniors keep on putting resources, research internships है. Nila is like one of the super seniors from my time. And then like everyone just like comes and collaborates on this. कुछ भी seniors को question पूछना रहता है, they ask, and seniors के साथ भी project करते हैं काफी सारे लोग. तो मतलब हाँ, this level of activity would be like really amazing, but it is like not a pressure to do like exactly what they are doing. आप डिस्कॉर्ड हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर पे भी आ जाओ, इनहेरिटेंस का. So Okay, you'd get a can lot of yes. Yeah. You'd get an idea of अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं.
हम्म um, जो इनवाइट भेज देना, डायरेक्ट मैसेज या कैसे भी। सॉरी। इनवाइट सर्वर के लिए और यहाँ इनपुट। मीट में भेजा है मैंने। ओके। नाइस। Teams. But in general, like this is very active for the people who are currently in college. For the pass outs, I think like there is not a lot of information. One thing Yes. that we really liked last year was कि kind of a reunion type रखा था online ही with all the like CoC members, which was really good. तो मतलब ऑनलाइन different career ऑनलाइन paths ये। वगैरह भी। हाँ हाँ, I think तुम लोग भी थे part उसके। नहीं, हम तो XY में था। क्या बात कर रहे हो, तुम लोग भी होने चाहिए थे। बट तब हाँ कोर ठीक है, कमेटी कोई में नहीं। नहीं था ना। नहीं, it was like more like juniors asking seniors question और मतलब गाइडेंस करियर पाथ, मतलब अगर कौन से डोमेन साइड जाना चाहिए वो सब था। ओके। So you can host that again this year. यस यस श्योर। I personally very much would be looking forward to it. And मतलब बहुत सारे seniors भी हैं who would enjoy it a हाँ, lot. ये एक चीज कर देंगे हम लोग। हाँ एंड दैट मतलब कोई वीकेंड पे ही करेंगे। हम्म, yeah, that would be great. And like no pressure as such कि ये सब करना ही है करना है। तो दिस वाज समथिंग जो हमारे सीनियर्स ने इन्फॉर्म किया था लास्ट ईयर जैन एंड में था। बट दिस टाइम करेक्ट। सिंस द एक्टिविटीज आर अ बिट डिलेड, सो वी वर थिंकिंग आफ्टर इनहेरिटेंस करेंगे। नाइस। एंड मतलब तुम लोग आई थिंक इंटर्नशिप वगैरह स्टार्ट नहीं, नहीं, मुझे वो टाइमलाइन समर में। सच्ची में अभी नहीं पता क्योंकि इतना कोविड की वजह से सेम्स ऐसे वियर्ड टाइम्स पे स्टार्ट हुआ है ना। सो हमारा 6 सेम चालू है। ओके। इंटर्नशिप्स समर, सो हाँ नेक्स्ट पहले सेम मई राइट। में होते थे आई थिंक। मई या मिड मई में। करेक्ट। सो नाउ इंटर्नशिप स्टार्ट इन जून और मिड जून, बिकॉज आवर हम्म। एनसेम्स एंड जून के फर्स्ट वीक में ही। ओके। सो वो थोड़ा सा डीले है बस। रेस्ट ऑल इज हमारा ऑन द लाइन आ गया, बट दैट वाज ऑल ड्यू टू द कॉम्प्रोमाइज जो हम लोग ने फर्स्ट सेकंड सेम में किया था। नो हॉलीडेज, वीकेंड्स पे भी करो काम। ओ वाओ, स्ट्रेसफुल टाइम्स। हम लोग आई थिंक वी हैड इट लाइक वेरी इजी। बट वो ऑफलाइन फन भी था ना आपका। हाँ, हम लोग कॉलेज आते थे सिर्फ प्रोजेक्ट्स पे काम करने के लिए, लेक्चर्स कभी अटेंड नहीं करते थे सेकेंड ईयर के बाद। अटेंडेंस का सीन एक्चुअली अभी भी चला है। एफवाई में थोड़ा हाँ परेशान करता है, बट जब एसवाई से से हाँ। इट्स ऑल चिलैक्स। हाँ अभी करंट हेड्स खुश है, नो, वो खुश है ना। दोस आर द प्रीवियस Oh, हेड्स। नो नो, previous. वो Okay. प्रीवियस हेड्स Then वो I don't know फाइनल you ईयर। guys really well. Then I would like an intro from you as well. यस श्योर। सो मैं आई एम सर्वज्ञ, द जनरल Okay. सेक्रेटरी, करंट जनरल सेक्रेटरी ऑफ सीओसी। Boris Johnson. Okay. ओके, यस यस। देन सो वो जो मेरा